Hello. And the Neon using their util to clear their space. A little bit of a missed timing on the backside for BBL. And already starting to feel some pressure. Losing that bonus early on your map pick. That is definitely concerning. Chalo. At least. I'm wondering if maybe see an early timeout from the BBL coaching staff. Maybe talk things over a little bit. Nope, we're right into it. And maybe head to the next buy, but for now, we'll just try to get this half investment to go. Two Stingers, Guardian, Bandit, Sheriff. Meanwhile, Boot's got an Outlaw. And there's only two players with full armor here to try to survive through that. And a pretty rough time as Lovers Rock going to be dead off the rip. The Hunt Fury. Hi, Himanshu. आवाज आ रही है ना मेरी? Eluding them for now. Bottom of one, but Woot is winning out the duel. To try to commit in for the flank. Kushmars will get caught on a timing there. Forward into the smoke. Meanwhile, Woot getting turned around, but still barrel stuffing with the Sheriff. Can clean it up. And Thrifty not to be found. It's all good. Really well disciplined. Able to kind of contain BBL. They aren't really ever able to break out towards the back of sight. The Outlaw there, always a good pickup against a eco buy. You know, that way in case they try to sneak in some extra guns, you're really gonna do some extra damage to them. Maybe now. We're gonna have a timeout. BBL. मैं नाइट बोर्ड चालू क्यों नहीं हुआ? Really come to fruition. क्या लिखा है तेरा जिम क्या? You know, outside of the pistol, and then the anti-bonus hasn't been particularly close for them either. So timeout definitely necessary, because right now what we're seeing from BBL, it's been a bit one-dimensional. We need to see a bit more depth. It's a lot of just full cluster outside of B, full cluster outside of A, try to make a go of it. We're not seeing mid-splits coming through, not seeing early control being established and planting a player up towards, you know, even elbow, try to get a peek onto nest, etc. It's just been very straightforward and very readable for Heretics. And there are teams that can make that style work. My mind drifts to Nongshim of teams that are left in this tournament that can just kind of hammer away at one strategy more or less over and over, and it'll because I was saying you stopped going to gym. हाँ, faithful आवा दिख रहा है. What surprises me is how good the eco was. Like that was the one round where I saw ज़्यादा चुभी हो गया मेरा. सोलो का ऐसा लग रहा है like बहुत दिनों के बाद देखोगे तो ऐसा ही लगता है I guess, or maybe I just gained weight. जिम जाना है मेरे को, थोड़ा बारिश की वजह से मेरे को जिम जाने को नहीं मिलता यार. कौन जाएगा बारिश में? अरे फोर जीरो स्कोर चल रहा है भाई. Benji Fishy, however, on this arrival into main, will have a corpse that utilizes neural theft. क्वालिटी कम दिख रही है. Immediately invested here. Could use the snake bite as well to maybe clear out a little bit of that space. The more the Kraven plays along the wall, the more at risk he can be. Here comes the reveal. Oh, scale forward. Barak just trying to keep him protected, spammed. Down to 47. Oh. Tap of the defuse, just trying to get a rise out of him, trying to get him to spam, trying to figure out exactly where this enemy Viper is, but he's already ensured that the defuse is not being stuck. And with a push, nice. Will be able to take him down. A hell of a lot invested still. Damn. Ruhul, hi. BBL getting themselves on the board. Hi. I don't exactly think this Oh, मेरे पास ये. was meant to go, but they get through it because of Larak able to be evasive on the jet. They're able to get that stun in there at the last second as well from the Neon. So Lovers Rock sparing them, I think, in this round, and then getting that a little bit of an extra angle. Kreven just comes in through the double doors. That's exactly what they're looking for. A little bit of extra layer
to what BBL wants to do. This time they're gonna leave Lorak in towards mid. Just watch to see if there's any kind of aggressive play, but way to this. चला डाला रे. They realized last round, right at the door were a couple players of Team Heretics, so trying to get a feel. Going on that flank. Just a bit too smart. Spike planted. Krevin, right place, right time. Comes away with that kill. Woot nearly having him lined up, and they're giving it to him one by one. You can't be doing that. Able to find another elimination now. All eyes on Boo to see what he can. मेरे को ये आया क्वेश्चन नाइफ बहुत पसंद है यार. Right of the wall. Push past, swing of the corner. He's got himself over to backside. Big fight gonna go over in. Try to cut off any deep flank from coming through. He's gonna hold it up to half. He's an immense amount of damage, and Lorak will be able to run him down after all. Now you're starting to see some adaptations from the side of BBL. Rose starting to kind of get a feel for this defender side of Heretics and how they want to kind of play some of the mid to late round. Obviously, this is just a counterplay set up at the beginning to wait out those curveballs and then make a reactive play off the back of that with your Neon. But the other big thing is that they're sending a player out to try to intercept Benji Fishy early. Benji's kind of had some free reign to make those flank maneuvers out from the B site. So we need to put a player out there to kind of sniff him out, see if we can just deal with him early before he becomes a threat. And these few rounds surrendered here by Heretics, seemingly enough to get a timeout call of their own sent through. You know how much of a momentum-based team BBL can be. Trying to ice them here before they get heated up. That's a damn good idea. And see if it ends up working. Yeah, I mean, I think it's the right time. उनकी वीडियो क्वालिटी कम कर, तेरा नेटवर्क जा रहा. हाँ क्या? Going into that second half. Again, more confident you're going to feel going into that second half. Again, generally on Breeze, because of the comps that we're playing, Hi. it is a little more attacker-sided usually. Not always, so you never know, but that's kind of where you're looking to do some damage. So as Heretics, you're already feeling really good. You've got 4. That's a pretty solid defender side. If you could get 2 more, make it 6-6, even better, 7-5, then you're going to be feeling really damn good. Anything above, 6 rounds here for Heretics is absolutely gold. So love the call, love the timeout. Right here. I think maybe just being a little bit more cautious. Wait for, I think one of the things I talk about here as a coach is wait for BBL to commit to that A. मेरे को एनर्जी का देखना था. You layer I don't know why. to try to slow him down. That's just a tag there on the Woot. He's only got the stinger, but he's got the overdrive behind it. So डीसी आती हूँ एक सेकेंड. but not ideal. Will just be the slow creep back over. ऑनर से पाजा. And looking to successfully avoid the heavier side of the map. Looks like Koshmar is going to get in transit though. Shifting over. Trying to reinforce it. Oh, devastating and ill-timed. Overdrive, however, is here for Woot. हेलो. And over on that tunnel side, nothing to be spotted. 12 seconds remaining. This spike is not yet planted. They have to go for this. लाइक मोड तेरा तेरा. हेलो. We can possibly get हेलो. अरे कब से बात कर रही हूँ मैं, तेरे को आवाज नहीं आ रही. spotted. Lloyd able to find that Oh, elimination. The I'm line very swing out. Rose trying to find the reset, but Boo अरे मैंने देखा ही नहीं. down eventually with that Guardian. अब आ रही है आवाज. हाँ आ रही है. Little use of the neon ult here to just buy some extra time, buy some space to put BBL in a bad position in terms of where the clock was at. Not even just where the map was at. That's cute from Woot. Really आज कौन nice सा stuff from कौन him सी थी मैच? and the IGL. Boo, man, Boo. Something With that TH Guardian, है. that play he had earlier in the qualifiers with the Guardian on Lotus, that was और disgusting. BBL Esports. Absolutely ridiculous. So we can I don't know long form. don't love the call there. मेरे को आज हाँ मेरे को एनर्जी की देखनी थी जो बाद में. Sometimes you just in the heat of the और moment, कर तेरी वाइटैलिटी की भी है. I could do मेरे this. I नहीं just gotta get this vitality. one तेरी ही है. then it's fine. हमारी तो नहीं है. वो गया 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 1 सेकंड में. TH की और BBL की. Oh damn. It's tearing them to pits. लाइनअप क्या है? लाइनअप Third. देखना. फ्लावर्स रॉ क्रेवन लॉलचा. Try to find अबे some इन्होंने stability here. लाइनअप चेंज किया क्या? Who's got a I don't remember.
रिमेंबर से अच्छा आई डोंट नो. हाय चैट हाय. Who watching, making sure that they अरे can't go on a पोपलू rotate जी out. हाँ ना पोपलू को लेके बैठी हूँ मैं. And as they rescale back towards the front of B, रोज इज worse than बोस्टर. increasing in potential value. क्या? बोस्टर को क्यों तोड़ दिया भाई? मैं किसी ने सुना चैट नहीं. किया था रे. अच्छा. Second and Woot, yep. It's gonna make use राउंड of it. विन. बोस्टर नाम से प्लेयर है ना, उसको तोड़ दिया. An electric performance from him thus far, and Heretics shutting down these thrifty attempts. A lot of talk about Larock coming into this match with how good he's been here at AWC. Another player who's been really, really darn good. बॉटल लेना भूल गई शिट. He has been incredible on the duelist and showcasing that he is no slouch on the neon. Love the मैंने ये patience, तो love the call. Obviously, the money was a little biased bit हुई weak for मैच. Heretics there. So Woot had to क्यों? go to the judge, but it worked an absolute treat. Now he's दोनों got टीम Benji's अच्छी open है. लाइक again. मैं ऐसा नहीं है Woot कि फैन हूँ has किसी been टीम hit. का. अगर जैसे अगर पेपर एक सारी ग्लोबली सपोर्ट करती है तो मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ. वैसे वैसे वाले Three सीन नहीं है. sheriffs, just a couple अच्छा. classics. Relay ball here all अरे क्या नहीं ऑन गया रे. नए नए स्किन्स यूज कर रहे देखना. हाँ ना. from at bay. Curveball will connect. फैंटम शेरीफ. Thrown over the top. मैंने उनकी स्ट्रीम लगा के बोल रहा हूँ तो डिले तो नहीं है ना. हाँ हाँ उनके स्ट्रीम में लगा दो. Might be able to see anything, but this is still Heretics able to keep their players. डिफॉल्ट आउटलॉक कौन चलाता है? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना इनके. हाँ थोड़ा सा ये आ रहा है. क्या बोलते हैं? उनका कुछ अलग ही. हाँ प्लेयर का कौन सा रहे प्लेयर. प्लेस के नहीं है आई गेस. वहाँ पे कोई इंटरव्यू चल रहा होगा आई गेस. काइंड ऑफ. Well, they're deeply held position for Discord Rian. में सबको बुला दे भाई. Okay, well, what in the world is that, Boo? Just अरे आई वाज आस्किंग कि गेम प्ले का आवाज और मेरा आवाज ज्यादा नहीं हो रहा. through the smoke. Yeah, just no hope. Doesn't want to give them any inkling here that they might be able to get this round to go. Rand's postured up on bridge. शरीफ ही चला रही है भाई ये. चैट में पोल डालते. 2v5 and it is a labored attempt to find that. What I was gonna do, मैं ये जो फर्स्ट मैच थी ना So much more तो इनका मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं ना, तो मैं पहली मैच नहीं देखने वाली थी, सेकंड मैच करने वाली थी. be able to find him from the back. So टीएच तो अच्छी टीम है. टीएच की मैच दे सकते हैं हम. securing themselves a lead Okay. already 7-2. एनर्जी तो जानती है जीत गई थी पिछली मूवी से. हाँ इसीलिए. I mean, you have to be feeling sky high right now. It's just so many defenders इस rounds बार here. शायद से स्पॉन्सर Obviously, अलग yes, लोग हैं. again, इस going बार up against लिनो Nico, लिनो but the लीजन fact की that you've been able to डेस्कटॉप put लगाए इन्होंने. your opponents, you've been able to put BBL. आई गेस सोनी भी है. मैंने सोनी का ये देखा था लोगो समथिंग नाम लिखा था उनके वेबसाइट पे. वेबसाइट पे जाना उनके दिखता है सब कुछ. Passion that you're going to get out of BBL. इनका सेटअप देखना कैसे. मेन लाइनअप 5 बंदे आगे बैठे, 2 कोचेस पीछे बैठे. There's always going to be हाँ that ना. member sitting in the या fire तो कोच pit रहेंगे या फिर वो क्या कहते हैं उसको. at a moment's notice. कोच ही होंगे. गार्डियंस Concerning एक thing is, जो of course, is that you're going to have to apparently चैट्स rip both वगैरह आई मीन timeouts. चीट्स वगैरह देख रहे हैं वो वाले लोग हो Both of सकते them हैं. committed. Oh. Somebody have. Never a good feeling. BBL. मेरे को तो कोच ही लग रहे हैं. Next several rounds to इतना go. सन्नाटा क्यों हो गया, क्या हुआ? Perhaps there's a chance. Get the pistol from there. इतना सैड म्यूजिक क्यों लगा है? You're in a decent enough spot to, jumpstart BBL that का second कुछ half सीन and still close out बॉस this म्यूजिक. half, but you drop this one from here. हाँ वही सोच रही थी, ऐसा क्यों म्यूजिक लगाया? Pretty good on Lotus, but पता नहीं थोड़ा सा हक दिए क्या ये. Heretics. Right. Still. And it is a tough ask. You know, their Lotus has looked a little bit shaky at वो times टायर. with BBL, but they were वाह able to kind of किस पे figure फोकस it out किया. in their हाँ second ना. round against EDG to really put together a much more solid performance than they had shown तू बता नहीं earlier. एक दिन So, विंसियो भी ऐसे मैच they were खेलेगी able तब to तो learn वॉच from पार्टी their करेगी. mistakes against one team. नहीं. Now going up against Heretics, yes, a team you have faced वहाँ पे before. कौन जाएगा फिर? हाँ ना वहाँ पे कौन जाएगा फिर? वहाँ पे बैठ के लाइव वॉच पार्टी करेंगे. नहीं वहाँ पे देख के मैं वॉच पार्टी नहीं करूँगी. एक्चुअली मैं नहीं करूँगी पता है, To not get punished. क्योंकि मेरे को लगता है मेरी ही ज़्यादा नज़र लग जाएगी. मेरे को नहीं करना है. खुद का कुछ नहीं करूँगी मैं कभी. मैं ऐसी पब्लिक लेके आएगी जो मैं हमारी टीम की वॉच पार्टी करे, बट मैं खुद नहीं कुछ क्रेडिट कर लूँगी. क्या? मेरा लैपटॉप का लोगो आया था. अरे
Posted up on top of the bricks now. इनका कितना अच्छा पिंग विंग होगा ना, मेरे को भी खेलना है। वही तो, मतलब होता ही नहीं है, बट अदर थिंग्स से इनको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, मेरे को भी खेलना है ऐसे जगह। और उन पे प्रेशर कितना होगा, उनको सारी ऑडियंस देख रही है उनको लाइव, स्टिल उनके कान हाय में शिनेक्स, कमेंट्री आ रही है उनकी। हाय। आया उनका कोच ऐसे चिल्ला रहा होगा, ऐसे खेल वैसे खेल, कोच के कॉम सुनने, आईजीएल के कॉम सुनने, खुद के कॉम्स यूज करने, हाँ ना मल्टीपल भाई, डिसीजन मैंने एक लेने। बार देखा था मॉड लॉबी भाई, मेरा खुद का दिमाग ऐसा हाँ वही, वो जस्ट मॉडल शट लॉबी अप। थी, ये तो ऑफिशियल लॉबी है अभी। आई वाज लाइक जस्ट शट अप भाई, शांत रहो, मेरे को खेलने दो। हाई लॉबीज में हर एक चीज इम्पोर्टेंट रहती है, इसलिए सिंगल छोटी छोटी चीजों को भी कॉम्स देना पड़ता है, पोजीशंस एंड ऑल। कि फुट आया, अगर किसी को फुट नहीं आया हो गलती से तो कितने तो कॉल्स फिनिक्स होंगे? अग्रेसिव कर रहा है। वो कब से एग्रेसिव खेल रहा है पता है? अच्छा, हाँ, वो तेरे जैसा अभी ही है, अब वो ब्लाइंड डालता है, वॉल करता है। इन लोगों के नाम देखना, लवर्स रॉक। बू नाम है उसका। हाय के गेमर, आज खेलना नहीं है, खेलना तो है मेरे को। हाय, देखते हैं अभी, एनआरजी की मैच देखने आई हूँ मैं। मैनेजर कहाँ गया? हाँ वो मैं हूँ यहीं पे हूँ। फ्लाई आवाज आ सऊदी रही है है। ना मेरी? हाँ आ रही है, मैंने कुछ तो बोला था। क्या खेलना है मेरे को बोली तो उसके बाद। नहीं, उससे पहले उनके नाम देखने के लिए बोला था। हाँ वही वाइपर ना, का वो ना, लवर्स रॉक और बू। वो ओमेन वाला वो ना, कि ओमेन बू करता है ऐसे, एक वॉइस लाइन उसकी। हैं, वो हाँ बू एक है, ओमेन। बो है पे पता नहीं मेरे को, बो होता अगर है शिनचैन किसी को वाला। टिपिक नहीं नहीं, तो अगर किसी को टिपी करके मारी ना, तो ओमेन बू करता है ऐसे, लेके बू। वो नहीं, वो बू ही बोल रहे, बो नहीं बू बोल ही रहे। बोल रहे, हाँ। भाई इसके बाल देख, यू। अरे अरे मस्त है काफी। अरे नालायका, भाई वो मेंटेन करने के लिए जो हालत लगती है ना, तारों की घसनी है भाई। मैंने किसी पक्षी का घर नहीं देखा कभी। हैं? हाँ, तेरा सर छोड़ के। अरे W's, I'll take that as compliment. ओमेन, उनका ओमेन देख कहाँ पे खेल रहा है। वाइपर के मुझे वॉल। लगा था, अच्छा हाँ, मुझे लगा था इस मैप मुझे के लिए 2 स्मोकर चाहिए, लाइक मेरे को अभी तक तो बहुत हाँ लोगों ने वही बोला है, बोले तो ना, इन लोगों ने इस क्यों बार नहीं पे लिया? लिया तो है ना ओमेन एंड वाइपर। इधर इधर, अच्छा उधर इस वाइपर, उन्होंने वाइपर के भरोसे छोड़ दिया। और इधर उन्होंने जेट ऑफिशियल का भी। लाइनअप लिया है, और बीबीएल के पास स्ट्रैट लाइनअप है। हाँ, बीबीएल ने एक गलती की कि दोनों इंटर ड्यूलिस्ट लिए, एक स्लो पैसिव ड्यूलिस्ट नहीं लिया। इधर फिनिक्स है क्या वो? जहाँ हाँ फिनिक्स, उनका वो कि लाइनअप डिसाइडेड होते हैं एक 2-3 महीने पहले, हाँ वो जो स्क्रिम्स मैं वगैरह बोल होते हैं रही हूँ, आई विल ना। जस्ट डू दैट हाँ मेन, मैं वही मेन करूंगी। एंड इनका सीन क्या होता है, प्लेयर्स के ऊपर नहीं रहता कि प्लेयर्स जो बोलेंगे वो खेलेंगे, वो कोच बोलते हैं कि ये हाँ एजेंट खेलेगा तो यही मास्टर करना है जाके। वही तो, कोच के भरोसे होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर मेरे को कभी ऐसा चांस मिला ना, चांस मिलेगा है ही हाँ नहीं, मिलेगा मिलेगा, श्योरली मिलेगा। बट कभी भी मिला तो आई विल गो विथ सेंटिनल एंड दैट आल्सो केजे, अरे मैं तो प्रेफर करने क्योंकि वाला था कि तू मिक्स वगैरह, या फिर अगर स्मोकर हार्बर वगैरह मेन केयर ले तो नहीं, तेरे को स्कोप मिलेगा बहुत। भाई मैं मेन करने के सीन लिए कैसा है कुछ है ना, नहीं, मेरे को डिवाइस दे दे। ब्रीज डिवाइस तो मिलेगा ही। ब्रीज मैप पे ना, क्या बोलते हैं, डबल मैंने, स्मोकर कैसे चाहिए पता है क्या, दोनों हाँ, डॉट स्मोकर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हार्बर और वाइपर में से कोई तो, और एक ऐसे हाँ ओमेन एंड क्लोव मिक्स ऐसे। आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन ब्रिज पे वाइपर एंड ब्रिमस्टोन का होगा। ब्रिमस्टोन के स्मोक बहुत देर तक टिकते एंड वाइपर की वॉल्स, नहीं तो फिर हार्बर एंड मिक्स।
checks. क्योंकि दोनों के पास ब्लाइंड एंड स्टन वाली He's gonna be यूटिल्स able है, to snuff. Yeah, Heretics, they want और to एल्स last ओमेन time. एंड हार्बर, They उनकी faced कॉम्बो off, बढ़िया so है दोनों की। All right, well, we get the sword. ये ऐसा स्मोकर म्यूजिक का क्यों सीन क्या लगा है? रहे हैं? He's standing by with a very special पता guest. नहीं, ऐसे लग रहा है एक तो कोई तो जीत गया है तो कोई तो लड़ाई करके आ गए। हाँ ना, How are you doing? Hello guys, how are you? Welcome to Paris. Yeah, thank you. पेरिस में हो रहा है ना ये? It's a pleasure. या श्रीमान का ये कर दिया यार, श्रीमान का पासपोर्ट ही आई मीन वीजा कैंसिल हो Great thing गया। about Heretics क्यों? is a strong start. नहीं तो पता नहीं, नहीं तो श्रीमान को देखने मिलते हैं हम लाइक इस वॉच पार्टी में। I think they वीजा का कैंसिल हुआ? I mean, they're going to have a crazy amount of confidence because they पता won नहीं, last देखना time उस पे around. How स्टोरी big या of a कुछ तो statement देखा था would आई it be गेस to कि do it? उसने इंटरव्यू बोला क्लियर live करना पे। होता है। it would be amazing. It would be the कुछ second और star reasons of थे, that I jersey guess। as well. That's a lot of aura. So let's see what happens. It's gonna be निश्चय tough वगैरह for भी आ us रहे, here, I निश्चय feel नहीं like. हो, कौन था, जाया आई गेस वाइटलिटी के साथ जाया है ना, वो आ रही थी और वॉच पार्टी के लिए। You watching I don't Spain? know. You think you got a chance? I think Spain is ट्रिगर्ड kind इंसान of a chance. और But I think दो France तीन है is the वाइटलिटी team में to beat this. कंटेंट क्रिएटर्स। कल देखेंगे ना हम लोग, कल है। You know? Morocco? No. ये श्रीमान आता ना मजा आती भाई। बहुत मजा आता है भाई, पूरी इंडिया से। हाँ, उसके अलग ही वॉच पार्टी रहती। महाराष्ट्र ऑडियंस रहती पेरिस में जब एक्चुअली रहती है। It's all the way. Yes, Team Paris is मिस्टर on the लिप way. लिप चुम्मी। They will win ए यार, shut up. their second tournament and be the biggest TWC team in Valorant history. Cheers, Mixwell. Enjoy ये your time. ईडब्ल्यूसी के चैट में हैशटैग बांधिल के चल जाता। हाँ ना भाई, अलग ही चलता। वो लोग डाउट पे आ जाते ये क्या है। Yes, we बू will भाई be बांधिल back की। into the studio. I don't know if it's coming home, but coming onto the desk Oh, Brad alongside Pitt with us from is Mishu. Kukuka. Welcome back, Kukuka. How you doing, darling? अरे तू उनको रोस्ट मत कर, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तेरी वजह से मेरे को वैलोरेंट प्रोग्राम नहीं मिलेगा। A great time. It's good to see Maxwell here. Good to hear his words. Actually, I thought that the team that he didn't mention. मुंह पे क्या भाई? And some way they would. हा, ऊट सूट नुसतं त्या वॅलोरंटला शिव्या घालायच्या। I don't know. I like the fact that he named एक everyone. काम कर जाए तो अब इनका इंटरव्यू चल रहा है तब तक तो अपना चिट चैट खोल ले। क्यों इनका चिट चैट नहीं सुनना है? इनको म्यूट करते हैं ना फिर। मेरे को मेरा चिट चैट नहीं खोलना है क्योंकि वहाँ पे मैंने कैमरा नहीं लगाया। अच्छा। इनको म्यूट नहीं करते, इनका आवाज कम करते हैं। अरे हो गया स्टार्ट, चलो। Every single time that we see Grace. मैं डाल सकता हूँ पोल यहाँ पे, रुक। शायद तो था रे ऑप्शन है कि पीसी से कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ था। कैसे मार रहे, देखना भाई। ये तू नियॉन सीख ले भाई, देख नियॉन को नर्फ करने के बाद भी नियॉन ले रहे हैं लोग। नियॉन का देखना उसका। मैं खेलती हूँ, भाड़े में जाए तू। वो तो तीन के लिए क्या बोलते, 3 राउंड पे वो लोग। अरे दोनों ने नियॉन लिए। हाँ वो तो है ही। मैं खेलती नियॉन, तू रहे पीछे। And 8 for Root here. LaRock, 7 नियॉन को चाहिए अच्छा डिवाइस। off. It is the अच्छा मतलब तेरे को क्या बोलना है कि मेरे ठीक है नहीं खेलते। you want to see here for तो नियॉन तो खेल सकती है, मैं खुद की बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी I think that for me, it has to do with the versatility. We expect a BBL on the defense that is going to be aggressive, that is going to look for those duels. Heretics will expect that too. We saw all the brawls there in A-Mate time after time. I think that Kashmaras is doing so much better now. I really think that those vote reviews and whatnot are bringing it a lot. कहाँ है हमारी पब्लिक? All right, we'll see what happens here in the second Public half. sorry, 8 to catch. 4 for Team Heretics. हाँ ना Will भाई। BBL come back here in map number 1? Let's find out as we send it back on over to Achilles and Paper Thin. Back in we go. See if they are going to be able to run this back in. इनके जर्सी देखना। Heretics continuing with वही देख रहा था मैं। 8 to 4. That massive start. Earning the bonus and then some on top. BBL doing what they could just to get जर्सी का तो अपने पास बहुत नॉलेज है, इतनी जर्सी पहनी है ना। A rough go of it. There's a lot of things for the Heretics. Some सिर्फ really जर्सी good वापस games. क्यों लेते थे? Having some pretty nice moments. वीनिक वाली जर्सी नहीं यूज करेंगे Big बस rounds where कभी। he's able to hold the line, get big 3Ks, going all the way back. नहीं, राउंड ही यूज करेंगे, मतलब वीनिक मेरे को पसंद नहीं। Like he's leading with the और राउंड कॉलर तेरे को चाहिए तो, या फिर नॉर्मल कॉलर जैसे होते हैं वो। कॉलर नहीं, सेमी कॉलर रखेंगे। वही तो। थोड़ा सा हाँ स्ट्रेचिंग। एक तो वैसा ही ऐसा राउंड टाइप, या फिर नॉर्मल कॉलर जैसे शर्ट को होते वैसे कॉलर्स, या फिर रहने दो। Phoenix just saying, okay, I'll be the tank. You go with वैसे राउंड लेके रखेंगे, और जो थोड़ा सा ना क्या एज रहती है ना हमारी राइट लेफ्ट। अरे जैसा मेरे पास वो रित्रा का था। bars will fall. काइंड ऑफ। ये तो मेरा वो इसका
वो ब्लू कलर की जर्सी देख मेरे पे फुल स्लीव्स वाली Has been stranded. रियल मैड्रिड की मेरे पास अगर वो इनका defensive बहुत रहती ना बैकग्राउंड jersey, साउंड लेता है भाई, माइक माइक कैप्चर कर रहा हाँ है इनका स्टेडियम city का। level का नहीं है Dialed in on this angle. फिर भी इसका क्रेज कितना है। Get that first little अरे burst वर्ल्ड कप towards है ये the neural जैसे depth. इंडिया BBL पाकिस्तान can होती find है the वैसे वाला pistol, वर्ल्ड but कप है they ये so हाँ बट वही पूछ रही हूँ, बट Little catch here. इनका तो बोल रहा है ना कि विसिटी जैसा नहीं है, Their pieces in place to बट sort of इनका use क्रेज the कितना है। Neos as a bit of a bait. एक्चुअली इन्होंने वो जो को स्ट्रीमर का किया है ना, उसकी वजह से Caught with some of that early util. my God. Lovers Rock goes diving back into B. को स्ट्रीमर की वजह से Trouble. लिख के दे रही हूँ मैं तुम्हें। Two other players around there for BBL. मार्शल यूजर And it catches मार्शल Heretics यूजर को भेज दिया completely off पीछे guard. So nice work up of the map for them to start. Getting सबसे स्टार्टिंग में पूरा यूटिल डंप हो जाता है that much हाँ ना, needed here ये क्या है ये for देखना। them to keep it वॉल competitive. गलत हो गई And as you expect, you want to funnel those orbs into Kashmaris's hand. नियॉन को कैसे मारे भाई मार्शल से, और नियॉन मार्शल कर ही क्यों रहा है। Trying to find his kill. Can't quite make it happen, but नियॉन और Ryan's ऑपरेटर का got कॉम्बिनेशन the डेंजर है be able to find it. मार्शल कर रहा था, वो ऑपरेटर नहीं थी वो। Benji Fishy. Maybe a moment of opportunity for Boo, but oh, it मे ends भी up उसको being लाइक one कॉन्फिडेंस for हो सकता है कि वो मार्शल से निकाल सकता है और उनको ही मिल गए। Grabbing या the फिर spike. कोच का कॉम हो सकता है इको खेलो कुछ भी कर ले लो Away, so guaranteed हाँ तो the ult बकी on the कैन line. ना। दे दिया फिनिक्स ने Maybe even find some additional damage. ब्रिज Has मैप है that ना Marshall picked up. हाँ लॉन्ग रेंज। Long Spotted, range. working his way into center pyramids, but Laroc will check back. 3 players to stay alive. A bit of damage dealt here. but बहुत पिक्स too bad for BBL overall. This could have gone a lot worse for BBL, to be honest. If मेरे को पहले वो Blue प्लेयर निंजा peaks की a तरह ही little लगा bit sooner there, उसने ब्लू he हेयर की है probably has Rose dead to rights. I mean, there was a moment where he wasn't even considering that there'd be another player in that तेरे को team. पहले दिखाई देता है, मेरे को बाद में दिखाई देता है। Dead. Actually, keep a couple Even I'm on live. Guardian, Marshall for Lovers Rock, just a share for Loita. All about trying to create some intrigue across the map, but ये फैंटम ना बहुत बड़ी दिखती पता है हाथ में अगर तू अपने एनिमी या फिर cleared like that. टीममेट के हाथ में देखेगा ना ऐसे ये हमेशा का है। सब नहीं कर रहा योन गया Lurking behind the box. ओ भाई हमेशा का यही होता है, आगे डुएलिस्ट आ जाते, पीछे हम लोग मर जाते, और डुएलिस्ट बोलते घुसे क्यों नहीं। Stuff for BBL. हाँ ना हाँ ना, क्या तू ही बोलता है, तेरा डायलॉग बोल रही हूँ मैं। I don't know. If you know, अच्छा snake है bite क्या got involved, ये there's राज some रखना था vulnerability नहीं, मैं क्यों रखूँ। right there. Say down to 5 Yeah. HP. Yeah, bite got him as well. Yep. Makes sense. शॉक डॉट से मर गए रे वो उसकी क्या ही Incredible गलती coordination वल्नरेबल from था वो BBL, and all of a sudden, we've got a real game on. They're only 1 round down. भाई वो लोग कम बैक कर दिए। आईजीएल सुधर गए शायद से आईजीएल कर रहा है वो उनका गंदा वाला सोवा ना अगर अच्छे से खेले ना बहुत सही एजेंट है Bandit. Getting involved in अरे नियॉन आउटलॉ क्यों कर रहा है। They're whipping out tall hell in the previous round, but that is a Sheriff massive chal shot to be found. And now Rien's looking to try to get that reset. अगर नियॉन Still, the damage शॉटगन नहीं ले सकता तो आई गेस उसको इस मैप पे नियॉन खेलनी नहीं चाहिए फिर, अगर इसमें आउटलॉ यही चलानी है तो। नहीं वही तो हो सकता है मे बी आईजीएल उनका गलत पीछे पड़ रहा है आईजीएल का भी फॉल्ट हो सकता है Benji ना now all अच्छा। alone, trying to assess where in the world he could have इनका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तेरे को आया ना साउंड। ओ आ रहा है अरे थोड़ा बजट बढ़ाओ रे। अरे आई गेस find कुछ तो उनके टेक्निकल stream पे इश्यू है। casters अलग है नहीं स्ट्रीम पे कास्टर्स अलग है एंड जो लाइव कास्टर्स अलग है ऑफ कोर्स अलग होंगे वो। a good attempt from Team Heretics, but not enough. चैट में चल रहा है यिनसु नाम से कोई तो है उसका BBL आवाज tying है things up. I mean, some of that good decision making, some of that good play we saw from Heretics on their defender side. सब बोल रहे हैं starting to प्रोडक्शन kind of गंदा falter है on this attacker side. Walking into this, they get the spot. Oh my god, disgusting. Regardless, अरे 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 ओ मैंने अच्छे किल्स निकाले ने। but you're not really taking. You know, you could have gone the other way around that pyramid there. उनकी चेयर का उनकी चेयर का उन्होंने प्रोमो किया था, लाइक फाइनली चेयर्स। They had a real great shot. हाँ कुछ अगर सीक्रेट लैब ने This किया ना half on its head, getting that big thrifty win. Instead, Loita
dashes their hopes. कितने की होगी वो चेयर? I assume we're going आहे to get the 10K final पर्यंत आहे म्हणून म्हणतो तुला तू हवा तर चेअर घेऊन टाक ही. ठीक है क्यों मैं? Looks to be the case. ये इंडिया में मिल रही है? हाँ सीक्रेट लैब की है. ये तो आइड्रियन की लेने की है. 8K 10K तक मिल जाती है. एटलीस्ट वो चैंपियंस का तो बचा दो. 2021 का आई गेस नहीं 3 का. क्या? I mean, now you're वो नहीं क्या वैंडल का 12 का नहीं you're worried about चैंपियंस का म्यूजिक वैंडल पे. again I talked about that उनके इधर ये क्या लगाया है? ये बॉक्सेस थे इधर वो? burning just a सीपीयू little रहेंगे bit नहीं तो for फिर BBL. वाईफाई का रहेगा लैन No matter how यूजर्स bad things get, अच्छा once they get that momentum, कैबिनेट्स once they get those ऐसा. जैसे लैन पे खेलते हैं ना. the fire will be roaring in short order. इनके लिए LAN अलग का से full server form क्या है? रहता है 16 kills लोकल here for एरिया Kevin, नेटवर्क. 15 for Loida. अच्छा वही है क्या? मेरे को लगा गेमिंग इसमें कुछ अलग है. Backline for BBL. नहीं रे. लैन Absolutely मींस कि insane. जो लोकल है ना क्या हाँ. हम कनेक्ट करते हैं उसको लैन They're कहते gonna हैं. declare LaRock just making a quick little exit back behind the half wall. Smattering of damage suffered. They've got a lot to watch. भाई उन्होंने कम बैक कर दिया. 8-8 हो गया उनका. Yeah, Boo. This should be, yeah, okay, a little bit of damage under Jens. Able to dodge this. तू बता कौन सा टीम जीतेगी? तेरे को क्या लगता है? Fury. टीएच का आईजीएल पीछे पड़ रहा है. मैं बहुत वही तो बोल रहा हूँ ऐसे ऊपर नीचे हो रही है. Lock, however, gonna be taken down. मैं टीएच को बोल रहा था कि टीएच जीत सकती है With the shock dart, and now because of that, लेकिन बीबीएल का अरे आईजीएल उन्होंने वैसे अल्ट करे तेरे जैसे. all up his rock arriving out from कौन सी? main. That's why he's able to find one before getting taken down. अरे Cleaning up the two, but now into the Right, 1v, GG हो गया. 2-4 rows to try to clutch this out. No snake bite, but not necessary. सोवा की अल्ट क्या. हाँ वो दोनों ने एक साथ कर दिए वो वाले. मतलब एक ही खत्म होने के बाद. Heretics will once again get themselves back into the lead. This is kind of a weird one. सोवा here की for a वही है. moment. सोवा की अल्ट Lovers Rock एक भी somehow लोकेशन slips the एग्जिट net पता हुआ ना प्लेयर की. between the camera and the trip. मैं हमेशा फंस जाती हूँ पता है. फॉर गर्ल्ट में. Back वही the तो. window, looking around to figure out what happened. उसका सीन क्या पता है क्या. In the meantime, Lovers Rock हमें snuck लगता है in, कि हम डॉज कर almost सकते हैं. completely destroyed बट the अगर round. तू राइट को गई इधर को लगने के बाद Heretics just barely able तो there. उसको वो दिखता रहता है With those 2 deep सेकंड के लिए. crossfire इसलिए setups, सेकंड अल्ट भी able to hold लगती on, है. but it was a lot राइट जाके closer लेफ्ट than they घूमने would've का. liked. अच्छा ये कौन बताएगा मेरे को क्या पता. Dropping those extra guns really painful. कोई पकड़ का मर रहे थे अभी तक. हाँ वही क्योंकि मोस्टली मेरे को नहीं पता. मैं भी सोवा लेता हूँ ना. मैं भी वही करता हूँ इसलिए मेरे को कंफर्म किल मिलता है. Heel's gonna go through as Kashmar's अभी मेरा सीन कैसा है मेरे को पता है. कुछ जो प्ले डॉज करते हैं वो राइट लेफ्ट करते हैं तो मैं लेफ्ट को ही लेके जाता हूँ राइट को दिखा के. cannot find the shot. But this pit doesn't ऐसा मेरे साथ किया तो छोड़ो यार मेरा मरना पक्का ही है. paranoia. Force it on, drawn up. Shot's gonna be loud. मरा कोई तो स्मोक थ्रू. लगी मेरे को. अरे वो देख अरे अरे As all of them are just so very low. Throws the cage अरे वो कहाँ जा रहा है फिनिक्स? हाँ ना. What a clutch this would be. एकदा तू लाइव बटन वर क्लिक कर बरं हवं तर. 3 health. लाइवरच आहे This हे बघ. should be impossible. Benji dead. Recon forward, the tap. Trying to bait him out. अरे टाइम गया रे. माय गॉड. But he just doesn't TH have का राउंड निकल time. गया. What an effort, what an attempt from Rose. 3 एचपी था और ऊपर से वो क्या ही करता. Empty-handed. The round is Heretics. As they will move up 10 वो to 8. फिनिक्स Rose डिकॉय is a करके जा रहा था. berserker, man. The lower his health gets, the better he is. It is हाँ ना वो थोड़ा भूल गया क्या मैं कौन सा एजेंट खेल रहा हूँ. on such little help, like the confidence he वो has घूम गया. to just keep going for it. And he's so crisp. I know he's not consistent, but man, he has been lighting it up. इनके हेडफोन्स बस रहते हैं ताकि इनका माइक वर्क करे. बाकी आईएम्स पे इनको आवाज आ रही होती है. Scuffed by for BBL. Couple rifles in there. Judge for Lovers Rock. And a couple shares for Loita and Krevin. And I wonder, how much Heretics is Platinum. ब्रेज लोटस एंड सनसेट है. They were selling a little bit of a fake अरे early, यार. using that Sova util. अच्छा बीबीएल ने चूज किया है ब्रीज. नेट गया क्या मेरा? But still, अरे down. अरे नेट ही चला गया मेरा अचानक. A lot of ults here though for BBL. They had to use the Hello. Blade Storm and the Overdrive तेरी लाइट. चार्ज नहीं है भाई. to
sure that this fast hit from Heretics चार्ज was क्यों नहीं है gonna get the मतलब? win, and it almost did. It came really Lighting damn नहीं था close. ना। It's Rose again. Him and Kreven and Loita absolutely going इनका crazy एम right रूटीन now. क्या होता है? And Rien's, yeah, जो मैं करता almost हूँ वो। had it. He had a real तो shot. क्या करता है? Able to get that first करता kill. था Death match. कोवैक्स एम लैब स्टेडियम Attempt. Lovers Rock now with the operator. Yeah, that's the first one we've seen on this map. मेरे को हिमांशु बोल रहे तेरे गाल ऐसे चुभी चुभी हो गए. Fishy. Trying to find the timing there. जिम क्यों नहीं जाती? क्या हो गए? Lovers Rock. चुभी No चुभी. idea that he's already gotten past. So it's a quick scale up, a camera to watch. क्यूट क्यूट दिख रही है तू। Blank is बोला है going. जिम क्यों नहीं जाती? Stay tucked here till kind of the last possible बोलने का minute. कि मैं क्यूट हूँ। Till he knows that whoever's watching Double Door has to turn their attention away. हे वो साइफर कैसे थरथर रहा है? It's a little bit greedy towards mid, and he can maybe punish उसको that. ठंडी लग रही है। अरे बस पैर को. Rock though, not pushing forward. However, Lovers Rock, considering they just clear the camp. They're gonna go to the other side off of that clear, and look at Lovers Rock. Yeah. He's reading. हेलो आवाज आ रही है? Fast. आ रही है. Let's push forward from Loita. लैपटॉप बैटरी स्टार्ट हो गया। Because it's not going to be a full mid crunch. Restart. We'll be playing splits, but now look at this. मतलब The फटक से हो counter गया कुछ rotates तो back. उसको। आई गेस बैटरी Heretics. पावर Position, one leaning back towards Argent's तो अब wall. जाएगा. Otherwise, a fairly empty sight. थोड़ी देर स्विच ऑफ होने तक वेट करता हूँ। Very nice. Shots ringing out. और तेरा जिम? Known. With pivots out, BBL, they want to try to get a काय खाल्लंच नाही मी सकाळ धरून. We'll try to prevent खा क्या करतो घेऊन येतो. However, he's able to find two options. नाही अगं दिवसभर Able to clean him up. घरी With that मम्मी. Furies, we now go into a 3v3. काय जेवण नाही बनवलं. मम्मीनं काय खाल्लं? Benji, giving them the neural, giving them the information to try to आळूच्या वड्या राहिल्या होत्या this खाल्लं. round over the line and get up to map point. दिवसभर फोनवरती बोलत बसले. Wall raised, they push through it. Lovers चांगलं Rock, लॉक able to find स्ट्रीम one, Kreven with डोकं खराब another. केले माझं. And Cosmos त्या भुकेमुळे माझी चिडचिड होती. but he's a little bit late on the काय आता ऑर्डर कर. जा चहा घेऊन ये मस्तपैकी. draw. Has them outdone. बंद केलं ना बाळाने शुगर वगैरे सगळं आता. Going over to BBL. सोड. काय करायचं कर. न्यायला सांगायला गेलं की टांगायला नेते. This is a tricky little setup, but because they have that Hunter's Fury and the time is so low here for Heretics. माझ्याकडे समोसा आहे. मी समोसा खाणार आहे. Guard, Benji does what he can यो to thwart the advances. And a little bit of a मचा मचा पोपली kiss to मरेल. the other side of the stage. Thank you. आता आवडून धरलाय त्याला. Just disgusting. You're 22. ए माझी बँडेड. To his teammates. अरे होय ना. Maybe that too. Playing off them. Little Broman. Bro moment. एकच बँडेजची स्किन आहे ना ती आतापर्यंत. अच्छा ही एक आहे. फिनिक्स कडे ती एक आहे. ती नवीन आली ती वाली. हा. हा राईट. कसलं भारी वारलं. अरे सपलाडा. A blink and you miss it round. एब्सोल्यूट सिनेमा था वो था एब्सोल्यूट सिनेमा. BBL. चलो देखो तुम हो गया. This is amazing work from them. Just अरे क्या वाइपर और जेट नहीं किया. हाँ ये देखना इधर एक मारा दो possesses, comes through. गॉड भाई. और इधर तीन. राउंड निकलते हैं ना. हाँ Decides, well, we gotta make it. इसने दो निकाले और सोआ ने एक मारा. What a read. खड़े रहे हो. Rose on his feet. AGL knows आईजेल that को he कौन था had वो that round जेट को sniffed कि out ऊपर बैठ करके. well ahead of time. Team Heretics have allowed it to get tied again, 11-11. Kashmaris and Boo. अरे बाप रे. Mention gonna be pop is. That comes in. तेरे को पता है आईजेल को कभी क्रेडिट नहीं मिलता. Eliminated. Lovers तो Rock. किसको मिलता है? Tag on Kashmaris. Cannot flex him out. He's trying to get that molly. जो खेल अच्छा खेलता है उसको लाइक आईजेल कितना आईजेल नहीं पता है वो सबको कैसे खेलना है. Still will have बट that क्रेडिट उसको मिलता जो खेला. ऑफ कोर्स टीचर को कुछ मिलता है बेनिफिट्स. The pit in play. यही तो बोल रहा हूँ. कोच को भी मिलते हैं अच्छे खासे क्रेडिट्स. आईजेल को ही नहीं मिलता. Speed as well. Elimination found one wrong. क्योंकि उसका वो काम होता है ना आईजल का. Woot will get taken down. उसको उतना ही क्रेडिट मिलेगा ना. हाँ उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका काम है. Pushing forward.
The spike is not within the pit, so they can get some access to it. But Hunter's Fury now going to be layered in from Rienz. And that should be टाइम बाय किया उसने, देखा तूने 1 टाइम उसकी अल्ट डिले कर दी. a little bit more. हाँ Find that elimination lover's rock. फर्स्ट मारा, फिर होल्ड करके रखा, फिर सेकंड मारा, फिर होल्ड करके अरे रखा, फिर मेरे मारा. मेरे को पता समझ नहीं आता, मेरी अल्ट ना एक मारने के बाद Up to 12. गायब हो जाती है. Point is theirs, but BBL उसके ऊपर देख वो रहता है, टाइमर रहता है सोवा के ऊपर. can absolutely send this into वो OT. टाइमर खत्म होने तक तुझे कॉल यूज The करनी good होती news है, here is ऐसा होता है. BBL is they had to expend so many ults here. It's 3 that get invested in this round. It's the run it back, it's the pit, it's the Hunter's Fury. शॉक डॉट से मरा. सो It does go Heretic's way, and it always feels a little uncomfortable with how fired up this BBL team is now. Nice ping out there to get that final kill with the Hunter's Fury as well. मैच पॉइंट है भाई. To get the spot onto the player. And it's going to be the pit for Krebin. He's not going to invest it early either. है ना तू Onto it. 2-1. Ooh, situation. मैनेजर. Scary there. Some flashes exchanged. मैच पॉइंट आ गया. Looks like a fake. I mean, आवाज आ रही है? हेलो. आ रही है. I mean, it shouldn't be that हाँ, हो. confusing or obscure. ये Yeah, क्या at least बोलते? to know for sure. जाऊंगा मैं जल्दी अभी. हाँ रुकना, ये मैच पॉइंट देख के जा. Has to play forward into Larock. He's going to win the fight. अंदर मरा. 3-1 tap. Rowe's going to be hot on his heels. Meanwhile, Love 5v4 हो गया. forward catching Koshmaras. आओ. ओटी पे जाएगा Finds लगता है. the headshot. हाँ. She now dead. Who knows. Doesn't get overcooked from Team Heretics. Yes. 3v4 हो गया रे अचानक से. This is too हक tricky. ना दे, हक ना दे. टीएच का विनिंग राउंड है अगर ठीक से खेले तो. Can't capitalize off of what Benji's doing. Nobody's in a position. लर्क नहीं दिख रहा कोई. ओ फक On भाई. top of that, मेरे को BBL's ऐसे pushing एंजाइटी हो रही है space पता when है. you're not ready. डाया वाइपर. ओ माय गॉड. Quick check of the TP. Now you know. There's the approach to the back. फाइट Boot able to trade it out. Rienz. Getting them out into a 2v2, but he's down to 5 health. बहुत बहुत ऑफ एंगल है. Do it all to try to bring this to Nah. Neither going to be connecting. Tucks a little bit further forward, and he nearly has it. But Oh my god. Our opening map, our opening series in the playoffs is going to overtime. ओपनिंग ऑफ एंगल है तेरे. ओपनिंग सीरीज ओवर टाइम चली गई. Unexpected. I think the way we got अरे here maybe a भाई. little bit kind of eyebrow raising in some moments. लेकिन Both उसने teams playing बहुत really ही good लिया था. defender ऑफ एंगल side. बढ़िया था वो. But with how well these बहुत teams are going, दोनों एक मतलब अकेला था ना वो. a battle of the wits अगर वहाँ पे between टेंस Rose होता and Boo. Make those little bit of adjustments. या फिर डीमन 1 होता या फिर Teams आसपास seem to होता. really have इजी क्लच था ये. finding अरे. those entries, finding those moments. On their Easily attacker जीत जाते, side, पता है. some good, you know, उसको clean स्प्रे ट्रांसफर नहीं हुआ ना वैसे. well नॉट स्प्रे coordinated. ट्रांसफर, एम Just ट्रांसफर. felt like they just don't have that same proficiency on that half of the map yet. But defender side, both ये teams लोग ये नहीं करते ना ड्रॉ. knowing when they need to strike, how to hold the line. ड्रॉ अगर हुआ तो डिसाइडर मैच फिक्स करती है फिर सब कुछ. Now, BBL looking for an A hit. इन पे ड्रॉ मतलब वो से होता है लाइक दोनों को एक सिंगल पॉइंट मिलता है ऐसा कुछ तो था. पता नहीं अभी इसके रूल्स कैसे. Spot out from Koshmaras. मेरे वक्त से था. गया. क्या ही गई वो. हाँ ना. Head on entry. Swing out though. Lover's rock is able to find him just with the spam. सीख जरा फिनिक्स कैसे खेलते हैं. Pyramids. और तू हमको ही ब्लाइंड करता है But it's going to be taken too quickly by और बोलता है आगे क्यों नहीं आए. Krebin would have to do it all, and that's gonna वाओ. हाँ 40 करता वो. हाँ ब्रॉन्ज लॉबी में. अच्छा. ऐसे गया था ना. हाँ. But I mean, I like the idea here from BBL. We kind of criticized them a little bit प्रिमोर्डियम. नहीं हेलो. earlier that they weren't trying. लैपटॉप शटडाउन हो रहा है लेकिन मेरे को आवाज आ रही है. ठीक है मेरे अंतिम शब्द बोल के जाता हूँ गाइस. बाय गाइस. मेरा लैपटॉप शटडाउन हो रहा है. बाय बाय. बाय 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 बाय. बाय बाय. आवाज आ रही है मेरी अभी भी. हाँ. वो बाय शटडाउन बाय. से लाइक लोडिंग पे लैपटॉप. बाय बाय. पोपल भी बोल रहे बाय बाय. बाय 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 बाय. मैं आऊंगा बीच स्ट्रीम पे आऊंगा. ठीक है फोन की बैटरी सेव करता हूँ. नहीं तो मैं जिम पे वगैरह कुछ हुआ लफड़ा तो मैं pixel. कॉल नहीं कर पाऊंगा. Krebin here. चल ठीक है. Oh, he does, but एंजॉय कर स्ट्रीम. मैं चैट में भेजता हूँ लोगों को. ठीक है हाँ. चाहे तो एक ही स्ट्रीम कर इतनी फिर चैट पे वाला खेलती Boot, a बैठ. very ठीक good है. sniper. हाँ.
love Yes. to Bye bye. that opening pick, get that extra player, because it's so often Bye. come down Bye bye. to that last man standing one way or another in these rounds. Uh-oh, okay. Oh boy. Making the exit for a brief little second, but decides, yeah, maybe I should just get out of here. But he sees them leaning A, and that's going to have Laroc coming over to reinforce the site. So they've got a good read on this. It's just, can they hold it? They're going to pass the op over to Boo, let Woot do the entry. This is scary. Still the relay bolt, still a paranoia. Drone spotting him out. Lovers Rock not going to be sticking around up front. 30 seconds left. Gets over some space. Meanwhile, Laroc, he just sprays and prays, and Woot's going to be taken down. Headshot, so even if he had the armor, it wouldn't have mattered at all. Volley over the top, Loida able to find one, ends with another shock dart kill, but Loida looking to hold his own. One enemy remaining. Boo will get flushed out the snake bite to take him down, and this overtime is not 10 over yet. Ah. Wins will fall as we get tied up 13-13. Yeah, again, it's very slow and Enjoy का stream. Yes. बेटा कौन जीतेगा? it's just हाँ. got to be a lot more explosive. You've got to be willing to take risks to clear some of that space. And it can be tough for sure. Your opponents really have a good idea of what you're doing and when you're doing it. And they're hitting some nice shots. इसके बाद मैं थोड़ा खेलने जाऊंगी. Those last couple of rounds, and then coming into this one, he's been able to just tap somebody who's at the door and just deny entry. अब भी बता तो बोलेगी वो टीम जीतेगी. Timeout being taken. शायद BBL Esports जीता. I don't know यार. Discuss a little bit. Try to, as BBL get that attacker side win. That has proved to be the more difficult side of the map here on Breeze. Sometimes it just be that way. See if they can flip the script. Somehow get their map pick here, but it has been labored to say the least. If they could even get there. Coach is right behind the players. Key there. Trying to rally his boys. Heretics. I just need to see a little bit more on this attacker's side when they get back to it, but get there when we get there. BBL has the explosiveness. Just got to be a little bit better. Some of their timings. This could just be a fast and heavy hit towards A. Set up on the wall. Paranoia going to be sent out as well very early. Real space going to be gained. Meanwhile, Krevin all the way forward through elbow. Let's see if he can hear anything at all. There's nothing or no one that could stop him from scaling into B. Take flight. Right here. Check over the opposite side. Know that the entry onto the side is going to be clear, but Boo. Oh, just finding a very lucky one through that wall. Laroc now dead. Stun is out though. Boo going to be isolated, picked apart. Loida able to find that elimination, finds himself a second as Woot will get taken down as well, and suddenly they're right back into this. Looking for the backstab, and Krevin now arrives. Benji Fishy dead in transit. Kashmar is only able to find the one. Tries to leap forward, but to no avail. It is now BBL with the upper hand, one away from taking their map pick. Yeah, this round, Heretics off of that timeout, thinking that maybe because, BBL is taking one, they might go towards that B side. They might have some kind of, set play ready to catch us off guard. And so they shift their strong side away, and they never really get a good read on this. Even when all that util sent early, they kind of think, well, maybe that's just a fake. And then Krevin again, using that space that he's given for free so well. Nobody on Heretics had any clue he had tucked in that far up on the map. Going up. They're ready to try to counteract this. Push forward past the blaze wall, but nothing to be found. Well, this is all just a play for a pick from Heretics. The spike is still sitting back in spawn, so they weren't even really going to try to scale into B. Just keeping BBL a little bit honest with that mid space, making sure that it's, at least for now, somewhat under their control, gives them a little bit more breathing room. And if they were to pivot towards A, they had opened up a lot of space.
We're on the pyramid side, but again, BBL trying to read that this is going to be a mid-re-hit that's thwarted if there was any thoughts about it from Heretics. 3 players on this side. This is all a big fake. You have so much that you're going to try to use to sell this. Paranoid, hold them back for now. Molly clearing out a forward angle. So far, all of BBL still believing in this, but now realizing Koshmaris, he's going to sprint through shop door, taps that one. Maybe slows him down a little bit on the entry. Meanwhile, Rienz is going to be able to find the rock, but Krevin sliding around the back of the wall, jumps up and will end up getting taken down. Koshmaris able to find the kill. The plan now in play. A 2v3 as BBL trying to bring this map to an end. And Heretics trying to extend this for a little bit more. Swing a back pillar, and Wood has Loeta dead to rights. None the wiser, nor is Lover's Rock. 14 of 14. We keep going. I like this because BBL hasn't really been biting on the fakes that you've been trying to sell with just like Rienz or just one player. So they add that extra layer in with the Phoenix, and that forces BBL to have to respect it. Opens up that space. Now that being said, you're going into Krevin's site, and that is scary the way he's been playing so far. He's only able to get one before he's dealt with, but for a moment there it looks like even though it's good macro from Heretics, they might lose the round anyway, but Loita, a lot of force here. अरे मैं वो स्टोरी लगा रही थी A deeper trip right towards the front of those stairs. स्टोरी लगा रही थी मैं मेरे को लगा तो चला गया Swing out and Boo suddenly firing on all cylinders. मेरे को लगा तो आ गया Saw glimpses of this, but I think he wants his map to come to an end. He wants to go over to Lotus as Woot will find Loita. And it looks like Heretics are going to find themselves back up to map point, potentially in flawless fashion. The mine Benji will fall, but it's going to be Boo. अरे यार अब इनका अटैकिंग नहीं होता 3K. Now 15 to 14. लगा दी स्टोरी यार A couple things in this round, but the big thing is that Benji just outright wins that 1v1 against Lover's Rock. I mean, if he doesn't win this, then there's not that extra layer of safety on site with the Cypher util. Boo, that is disgusting. Ridiculous stuff from the IGL. Shown up big time. At times 14 चार्जिंग 14% होने की वेट कर रहा हूँ क्यों अरे those players having stellar maps. ठीक है Very different play styles, but get the job done one way or another. Fast hit again here from Heretics. इनसे अटैकिंग थोड़ा कम ही होता है ना लास्ट टाइम नहीं हुआ था इनसे Fight on two fronts. Rose, however, going to be overwhelmed. Gets a good amount of damage off that shock dart, but I don't know if it's going to be enough. Might just be the end of this one here on Breeze. Plant onto the corner. 5 players strong. Cam going to be cleared out. Laroc Spike planted. needs to do something incredible alongside Krevin. Dirtball set the try to delay. The spot on the wand to reach the goal. ah Lover's Rock will get taken down. Laroc's dead, and now it is all on Krevin. He has been ah this map, but can do no more. Team Heretics come out swinging. And they take down NTR BBL's map pick, Lotus. The staging ground for Heretics to potentially get themselves a 2 Hi Kachura eliminate Kachura BBL from EWC. It's a fantastic Hi to our playoffs. Overtime from Lotus has BBL been able to continue to learn and improve on a map that used to be a little weak for them. नाइस चलो थोड़ा अभी हम खेलते हैं Expectations and for Heretics' hopes of getting through this one. थोड़ा हम भी तो खेली
डिस्कॉर्ड बंद करते हो। Hey, who you rooting for this? रूटिंग क्या होता है? इतनी इंग्लिश मत झाड़ो। आओगे खेलने? स्ट्रॉम पे कर एक मैच खेलेंगे हम लोग, फिर एनआरजी का वो मैच देखने जाएंगे। सेम ही रैंक है हमारी। Match found. हो गई मैच, टीएच जीते ओवर टाइम में। हाय स्ट्रॉम ब्रेकर, आप इज लाइक आप इनसे नहीं मिले है ना अभी तक? यू डोंट नो हु इज दिस? मैं निकल जिम, ये क्या ग्लिच अभी तक ठीक नहीं हुआ? कौन सा ग्लिच? अच्छा डेथ मैच का क्या? हाँ Fight. I am with you. We are strong. खगेश Take them out. क्या मतलब? AWC देखा तो गेम प्ले सुधर गया मेरा। क्या ही बने मेरे से। आए ईल तो लेने दो, मुझे क्या पता तू उधर खड़ा है। What the hell was that? अरे पागल है क्या ये थोड़ा? माउस क्यों नहीं घूम रहा मेरा? Ghost boy. Bye bye. Ghost boy. Bye bye. FPS ड्रॉप, थोड़ा रुक जा। FPS ड्रॉप, थोड़ा रुक जा।
अंतती Why did I die? Woohoo! 132! 132! Hello. एफ के चले गए क्या लोग? तो बहुत बड़ा मैप लग गया भाई. Useless individual. I killed them. Better luck next life. 10 kills remaining. A power pack. क्या? एक और लग जा, मैं चल जाऊंगी. अरे 5 kills remaining. ठीक है, खत्म ही करके जाते हैं. One kill remaining. रे यार हट. ये लोग गाली क्यों दे रहे थे इतनी? चलो हम खेलते हैं कंपी. नहीं रुको, मेरे को खाने के लिए कुछ लेके आना है, मैं पहले वो लेके आती हूँ. तब तक रुको. यो, ये तुम कल हम खेले थे ना? कल आओगे खेलना है या फिर मैं सोलो ही जाती हूँ? छोड़ो यार. नियॉन खेले थे आई गेस तुम, राइट? आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर नेम. मेरे को ये लेके आना है खाने के लिए, कुछ लेके आओ. किटू किसके साथ खेल रहा है? अरे बाप रे, मैं एक मैच सोलो खेल लेती हूँ. मैं एक मैच सोलो खेल लूँ, शायद जीत जाऊँ. खतरनाक लॉबी आएगी वरना. ओ भाई साहब, एक सोलो खेल लेती हूँ. अगर वो हारे तो फिर जाने दो, सब कुछ छोड़ दो, फिर मेरे को देखना ही नहीं है. लेकिन अगर वो जीत गई तो फिर हम कंफर्म खेलेंगे. नहीं जीती फिर भी कंफर्म खेलेंगे, डोंट वरी. नियॉन थे ना आप? नियॉन, रुको. अरे इसका आईडी कहाँ है? हाय लिटिल गेमर. नहीं ये नहीं.
नेक्स्ट थी मैं। हाँ नियॉन खेले थे ऐसी। स्मर्फी आते हैं हम लोग, फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे आज। अरे माझं पूर्ण नाव घेऊ नकोस, नको 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 नको। न न न न न न न माझं पूर्ण नाव नको घेऊ यार. Good. Just call me Nee because I don't believe. थोड़े सब्सक्राइबर्स. Way to plat. I also want to rank push. Way to plat. मेरा plat है ही नहीं. मेरा देख रहा है क्या चल रहा है ये करियर मेरा. छी तत्ती ये मेरा नहीं है. रुको रुको. This is my. What are saying? Watch party करते हैं भाई. करनी है मेरे को. ये एक मैच खेलनी है. रुको मैं खाने के लिए लेके आती हूँ यार. चलो. हाय. नहीं मैं एक मैच सोलो खेलने वाला ना, वही तो बोल रही हूँ. एक मैच सोलो करूँगी मैं एंड आफ्टर दैट वी कैन प्ले. खेलोगे? करो. कल भी नहीं होने दिया था. एक फ्रेंड है. बट खेल नहीं रहे ना. खेल नहीं रहा. क्या क्या करूं? मेरे को फास्ट ट्रैक तो नहीं करना है. तो दो करे क्या? तो फिर मैं एक डुओ खेल सकती हूँ. एक डुओ खेल के फिर 3 स्टैक ऐसा कर सकते हैं. हमेशा का है मेरा. बहुत कंफ्यूजन रहती है. मैं आ जाना भाई. मेरे को बताना है तेरे को. मैं समोसा लेके आती हूँ. खाना है मेरे को. टू स्टैक तेरे साथ नहीं. ये जो किट्टू बोल रहा है कि मैं आता हूँ करके. वो कहाँ गया नियॉन? वो चला गया क्या? कल का नियॉन है क्या? हंस क्यों रहा है? हंस मत. क्यों? अरे वो भी आने वाला था. सो आई एम आस्किंग कि वो है. क्या किया मैंने? अरे तू बहुत रेज वेट करता है. नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ. अरे आए यार. मेरे को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक और प्ले चाहिए होगा. फिर एक तो डुओ करूँगी या फिर मैं सोलो जाऊंगी. रुको किट्टू देखते क्या करता है. इधर ही हूँ मैं. इधर ही हो तुम लोग. तुम लोगों की पीक रैंक क्या है रे? मैं खाना खाना है मेरे को. वैसे भी मैं अभी स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ. हाय. ये क्या ही होता है? हाय हाय ये क्या हो? कॉल पे हो. ठीक है. फिर मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ. फिर कंपे ले डायमंड असेंडेंट.
हाँ आई डोंट बिलीव। अरे तू 1v1 करने वाला था, तू ही था ना वो कल वाला। आह, आती वेट। तू ही था ना रे 1v1 वाला, तू आया क्यों नहीं रे? तेरे को बोला था मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके रख, जब मेरा डुओ होगा फ्री तब मैं दिला दी तेरे को। 1v1 करते हम लोग, ऑन स्ट्रीम भी कर लेते। बुला लो ऐसा। अभी वो गया जिम, वो 6 से 8 बजे तक जिम जाता है, तो वो टाइम छोड़ के एंड आई गेस सुबह थोड़ा लाइक 12-1 बजे तक वो कॉलेज जाता है, सो वो टाइम छोड़ के। तो ये दोनों टाइम छोड़ के तुम बाकी टाइम आया करो लाइट लाइक प्लीज। हाय। एंड में बताना आपने भाई, मैंने बोला था डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले यार। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर, तू डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर। एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्कॉर्ड डालने का, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क डीसी आई गेस। किटू तू स्ट्रीम पे नहीं आया? किटू का आवाज क्यों कम आ रहा है? अभी भी यही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। तो एक काम कर, तू ना मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले और उधर टैग कर कि मैं वो रहना हूँ जिसको आपकी डुओ के साथ 1v1 करें, ऐसा कुछ तो ऐसा लिख जाए जिससे मेरे को पता चले, और फिर हम लोग करते हैं। मैं तेरे को बुलाती ऑन स्ट्रीम कर, बस उतना 1v1 करने के लिए भी स्ट्रीम करूंगी मैं। हाफ आवर की तो हाफ आवर की। ए मैं आती हूँ, रुको यार कुछ खाने के लिए लेके, रुको 2 मिनट आती हूँ मैं किटू। आ, 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 आ।
आई एम बैक। आजा रही मेरी? 1v1 करेगी पहले। अरे बाप रे, इतना बड़ा। चल हालांकि वार्म अप नहीं किया मैंने, पर चलेगा। स्क्रिमिश में हाँ हाय टाइटन, वेलकम टू स्ट्रीम। चटनी बहुत ही तिखट है। History doesn't remember the almosts. We'll be the best, or we'll be forgotten. वैंडल ले रही है मैं। Fight. Who gave you all that confidence? मैं खा रही हूँ थोड़ा, सिर्फ बोल नहीं रही हूँ। अरे रुको ना, बात तो अंदर। तो इतने जल्दी इधर कैसे आ गया? Isn't good enough. चलो चलो। डरा रहा है मेरे को। Right then, let's go kill them. किट्टू की कोचिंग अच्छी गई है शायद। हाँ। अरे मैं फुटस्टेप लेके बैठी थी वहां पे। क्या मतलब, आज फैंटम का दिन है। No more theory. उधर टाइमर इनफाइनाइट क्या दिखाता है? 10 राउंड से होते हैं ना इसमें? मेरी शरीफ कब ली रे? Let's kill this competition. मेरी शरीफ कब ली? तेरे पास भी थी क्या शरीर? हाँ, कोरोना में लगा तो अभी। फ्लिकता भाई। इतना गंदा कौन मारता है? अरे वो कभी कभार हो जाता है गलती से, और बोलेंगे कि फ्लिक है। हम लोग आएंगे सेम केडी सेम मार के। क्या मतलब दोनों प्रो है? दोनों ने आगा था भाई, सेम ही है भाई, सेम ही है भाई। Back to it. यार मेरे को रुक के मारना चाहिए था। डब्ल्यू फ्लिक आना अच्छा था ना? हे नहीं, मैं गोली मारना छोड़ दिया है, हेड लगा था। हाँ मेरे को डैमेज पड़ा था। छोड़ मत फिर। अरे बाप रे, कहाँ पे है? अरे उधर थोड़ा एक बक्सा है, उस पे चढ़ गई थी। तेरे पास भी है? दिखी नहीं थी तो। हाँ ऐसा, इसीलिए ऐसा आइटम लिया मैंने, दिखता ही नहीं है एक्चुअली इसमें ना। तेओ लेने का, तेओ दिखता ही नहीं इसमें। अगर तुम्हारा कलर येलो तो ही। ये तुम रेड पन्ना दिखा रहे हो तुम। Right then, let's go kill them. मेरी तो मेरे को क्या मिलेगा? हा हा हा। कुछ भी नहीं। आई, कुछ लगाना चाहिए था शायद। शिट। हाँ।
मेरे को ऐसा क्यों लगा जानबूझ के आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ आ! तेरा शेरिफ के शॉट लग रहे हैं। मैं भी शेरिफ चलो। सेम सेम। ठीक है शरीफ शरीफ मैं शेरिफ के नहीं लगते हैं। ओ! नाइस शॉट अरे पहली बार लगा है कोई, मतलब मेरा तो स्क्रिमिश या फिर ऐसे डेथ पे नहीं लगता। तूने अगर पहले स्टार्टिंग का डेथ में देखा हो तो कभी कभार ये लगता है, इसलिए मैं कभी चलाती हूँ, बैंडेड चलाती हूँ मैं सच। नाइस रे, मस्त 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 लगा मेरे कॉम्पी। हेलो। अरे वैसे मेरे को थोड़ा काम है यार करने के लिए हाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हें अगर काम करना है तो तुम काम भी कर सकते हो या फिर कॉम्पी भी खेल सकते हो। हाँ कर लेता हूँ काम में हाँ चलेगा चलेगा, कोई ना, करो करो। चलो ठीक है बाय बाय। स्ट्रीम पे रहूंगा बट मैं हाँ हाँ, स्ट्रीम पे रहूंगा मैं यस यस सर, यस सर। ठीक है जी बाय 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 बाय। ए देखो देखो क्या मिला। हार्ड कैरी, रेडियन क्रिस्टल। ये कैसा क्रिस्टल है? रेडियनाइट क्रिस्टल। चलो इसका मतलब हम लोग सोलो जाएंगे। वांना डू ट्रायो। अरे वो गया ही शायद, तुम आ जाओ, अकेले हो तो। वो कहाँ गया वो, उसने कुछ बोला ही नहीं। आ जाओ, फायर स्ट्राइक नहीं करूंगी मैं, फायर स्ट्राइक अगर लगा तो मेरी पार्टी लीव कर दूंगी। कोई तो एक ही आना या फिर दो आना। हाय। लियोन छोड़ के कुछ और खेल दो। जस्ट आस्किंग। मतलब कोई और ड्यूलिस्ट जो नियॉन को नर्व किया है ना, थोड़ा आपसे कल स्लाइड भी नहीं हो रहा था उसकी वजह से। और मेरा डी रैंक मैच है। ये मैप नहीं यार। आप करोगे, आपका हो जाएगा। मैंने, हाँ तो फिर आप करो। नहीं खेला मेरे को मैच। हाँ मेरे को नहीं खेलना है मैच भाई। नहीं नहीं, ऑल्ट F4 मत करो, ऐसा ही छोड़ दो। हम्म। Match found.
एक ब्लाइंड वाला ड्यूलिस्ट ले लो भाई। फिनिक्स आता है आपको? ये ले ना। हाँ हाँ, मैं स्मोकर ले लूंगी। अरे स्मोक कौन लेगा फिर? अरे स्मोकर फिल्म का आएगा। अरे चेंबर अच्छा है। मेरे पे है ट्रैप ट्रैप। पीछे से मैं ही मर जाती हूँ, पता है, हमेशा स्मोक करती रहती हूँ पीछे। ये लोग घुस जाएंगे ड्यूलिस, इनको क्या। और फिनिक्स अल्ट करके वापस आ जाएगा, यही मरेगा, फिर बोलेगा पीछे क्यों नहीं देख रहे हो, मेरे को कवर क्यों नहीं दे रहे हो करके। बिना बात के टॉक्सिक हो जाएंगे। दो स्मोकर है उनमें, क्या करेंगे दो स्मोकर का। ब्रीज मैप भी नहीं है। आ रही है। चलो, वो कॉपी किया है ना मैंने। हाँ है। उसको लगी। अरे खोलना भाई, उसको लगी है। हाँ ना, वो ही ले रहा है। अरे बैक स्टैब। कितना था वो मिक्स? मैंने रेना को दिया था 80 से। अच्छा रेना को, मेरे को लगा मिक्स है, इसलिए मैं मिक्स के ऊपर गोलियां चलाई। 26 लगा उसको। कहाँ जाना है? सी Can you heal? Heal like. इससे अराउंड मैंने लिया नहीं, मैंने 2 स्मोक्स लिए और गन ले ली। बैकस्टैब है, बैकस्टैब है। 52 Rena. चलो चलो अब चलो, अब चलो। अरे स्किन किस पे? स्किन किस पे? Anyone feeling generous? मिक्स स्किन है तेरे, मिक्स मैंडल स्किन है। हां मैंडल की स्किन है। अरे क्यों बता रहा है उसको? ये ट्रेड करते हैं। मेरे पास बाई नहीं है रे, बट है किसी पे? तेरे पे है चेंबर? देना अपनी गन देना। देना अभी रहने दे, बाय कर ले। अरे उसको बताया मत कर यार, मेरा ये कौन खराब हो जाता है। है इसका मैं। आ जाओ। ट्रेड भी नहीं करते वो लोग।
अब ये साला काफी जल्दी कॉल दे दिया। हाँ ना, रुको रुको, ट्री में हो सकता है। आजो मेरे साथ। Player standing. किधर है? Spike down A. किधर? अब भी जहाँ से गया वहां से है। अरे यार किससे है फैंटम? इस पे नी पे सारी स्किन था। नी पे ना सारी स्किन्स। बंडल है। नी पे बंडल है। Thank you. Nice skin. Nice skin. Sick. For the champions. आदमी बोल दिया रे वो, हट। नी पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। बैक स्टेप हो गए, केयर करना। ओमन स्मोक करके आता है। बैक स्टेप आएगा रे स्मोक करके, ट्रैप पे स्मोक करता है वो। Reina is not as fearless as she appears. Don't back down. Smoke's up. We'll catch them. अरे पीछे आ गया। Fall back. हाँ रीना पीछे था किसको? रिवील नहीं किया था प्रॉपर। कहा था रहना? रिवील ये नहीं। क्यों? Fall back. अच्छा अच्छा, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। Last player standing. इधर का और, हाँ उधर का और लिया था। मिक्स कैरी, मिक्स। Trust. Mix with ace. Smoke's up. Smoke's up. Damn. Nice one. मेरे साथ कोई इतना आया नहीं, कोई नहीं था, तो अकेला मरा है, देख वहाँ पे। These new friends of ours are not too friendly. Need a drop. बाय करो ना, मेरे से ट्रेड कर लो, मेरे को दे दो नॉर्मल गन। हाँ तो बाय दो ना। अरे है नहीं मेरे पे। हाँ तू चेम्बर से कर ले शायद, तो एक और किसी पास थी ना। अरे वो भी चली। यार मैंने बाय दिया ब्रो। एक और किसी के पास था ना स्किन। ना तेरे पास है क्या? अबे फॉल बैक, फॉल बैक, फॉल बैक। अरे होल्ड कर, शांत रे, शांत रे, इधर शांत रे, शांत रे, शांत रे।
Come on. Oman. One enemy remaining. ए पे था इसे, ए पे था शायद। भाई किसी के पास गन्स नहीं है, सारे ऐसे ही पड़े हैं भाई। गोली मारी। Trust each other. That's all. अरे चला तू, चला या फिर चेंबर को दे, वो बैक स्टेप देख लेगा। ब्लाइंड जरा संभाल के भाई, हम अंधे हो रहे इधर। आपको ब्लाइंड करूंगा, डोंट वरी। मुझे भी पड़ी भाई। नहीं क्यों यार, नहीं क्यों है ना तेरा खुद का, अकेले के लिए क्यों वो यूज करना ना। आना फिनिक्स, बाय फिनिक्स। ऊपर है साइड पे, एंड वन बैक स्टेप। 117 दोनों लो है। हील हो रहा है वो। ये आया कष्ट का। फैंटम बाय करना, एक कोई तो फैंटम बाय करो ना। क्या कर रहे हो दोनों? अरे बाय मांगो ना तुम मेरे से, देता हूँ। अरे मेरे को इकॉन संभालना है, अपना खुद का इकॉन खराब होता है इसीलिए, वरना क्यों मैं ट्रेड करती। ब्लाइंड देना, ब्लाइंड। I have the spike. Bring them down. Reloading. Blocking sight. क्यों बोला तूने भाई इनको कि मेरे पास स्किन्स है? कॉर्नर देखो। रुको, Last player standing. अरे बैक स्टेप। They keep trying to silence us. We keep talking. भाई 3 की मैच ले लो भाई, 3 की मैच ले लो। उनको बोलो थोड़ा खेले, स्किन से अच्छा है। शेयर कर रहे हो क्या? बाय उस पे, बाय ले ले। Thank you. इधर ले, मेरे को लाओ, तू ये ले। भाई चेंबर क्यों आगे भाई चेंबर तू क्यों आगे जा रहा है? तू क्या ड्यूलिस्ट है क्या? रुकना पीछे ट्रैप के लिए। वो घुसे जा रहा है बस। अरे कॉर्नर्स, तू क्या रिवील डाल रहा है मेरे को बता। तू रिवील 34 है। जीजीस भाई, रिवील डाल ना तू भाई, स्टार्टिंग में ही डाल दे, पीछे तेरे मर रहे हम लोग। कुछ मत कर, एबिलिटीज मत यूज कर। उधर ही हिल हो रहा है। एबिलिटीज मत यूज कर कभी भी। अगर तू अकेला होगा तो एबिलिटीज मत यूज कर, क्योंकि वो लोग कहाँ से पुश करेंगे नहीं पता। अरे नहीं, सच्ची बोल रही हूँ। ले भाई, ले भाई, देख। ये सुन, पहले ये कौन है? चैट में आया है। हाय थोड़ा एक काम करना, पहले ही रिवील डाल दो। नॉट गोना लाइव, ये क्लियर नहीं हो रहा, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। इधर सॉरी, इधर ये डोर के पास वो क्लियर होना चाहिए। पहले ही रिवील डाल दे और फिर क्रॉलर कर दे साइड पे। साइड पे रिवील का कोई फायदा नहीं है। नहीं है उधर, रिवील नहीं हुआ ना।
my god, how? That is 103. 103 is it? They're blind with fear. एबिलिटीज मत यूज कर, क्लोज है वो लोग। एबिलिटीज से क्या होता है, यू नो, तेरी लोकेशन पता चल जाती है। सो ट्राई करो कि एबिलिटीज थोड़ा दूर से ही हो यार, इनिशिएटिव के तो दूर से ही करनी चाहिए, इसीलिए बोल रहे हो। Show me where to go. और ये जो ड्यूलिस्ट होते हैं ना, इनका होता है कि लाइक पास से करे एबिलिटीज यूज। सेव करो, अरे बाय नहीं है, किस पे सेव करो? मैं तो बस आपको देख रहा था, नहीं सच्ची बात है, सच्ची सेव करो भाई सब लोग, बाय नहीं आएगा नेक्स्ट राउंड। बस देख रहा था, मैं करनी चाहिए। अरे ऐसे मत देखो मिक्स को, नहीं नहीं ऐसे नहीं देखते, ऐसे ऐसे नहीं देखते, ऐसे ऐसे ऐसे। रिविल तोड़ा कोई तो इधर, रिविल तोड़ा, क्लोज है कोई तो। Player standing. अरे एक तो ये धकेल देता है भाई। तो पीछे खेलना, मत खेल आगे। बी या फिर सी खेलो। हाँ हो गया भाई, लो भाई। भाई हमारा सेंटिनल पहले मर रहा है भाई, जीजी भाई क्या चल रहा है? केडी मेंटेन करते हैं भाई, डी रैंक ना हो जाए बस। They're not better than me. इधर भी हो सकती हो Bring them down. Oh my god, Jet भाई, इतना बताएगा। बता के भी, इतना बता के भी। Bro, Jet का FPS I don't know. कॉर्नर। Spike down. C. अरे अंदर ही बैठा था उसके। बाइक ले और जा जा जल्दी 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 जल्दी। ब्लाइंड वगैरह यूज कर। पीछे ही दोनों, मेरे पीछे। सेज लो है। गया भाई। अरे हिल तो हो जा। 30 seconds left. Oh, Jet. तुम लोग जेट को शे भाई। If I throw it left and you go right, I can't heal you. Or Jet wait इधर आना। for that matter. बस एक रिवील ये होता है ना, तुम्हारे पास कुछ और मत है बाय कर से ऊपर दादा नहीं चाहिए। पेयरक्स बाय करो। ओ गोस्ट ना तेरे पे, गोस्ट। रुको मैं बीपर लगा फर्स्ट राउंड। बीपर लगा, सी पर टीपी लगा के आगे पुश कर, दिखे तो पीछे आ जाए एक मार के। Smoke's up. Fall back. Smoke's up. बी प्लांटर को मारा मैंने रे। We got this. ना
Spike down A. Folks up. ब्रो जेट क्या है भाई? गॉड Last player standing. Spike planted. यार वो ऊपर से आ रहा था, मेरे को दोनों तरफ से फूटा रहे भाई, क्या Remember, stay out of the fire. Reloading. Folks up. Folks up. There they are. Spike down B. One enemy remaining. There. Flash. Night time. Sorry. Only brought enough for me. सी पे आ जाओ कोई तो, सॉरी सी चांस सुन के ब्रो मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता भाई, मैंने पी क्यों? उसका डिवाइस अच्छा होगा। There. Reloading. Spike planted. Last player standing. यार टाइमिंग यार, ये किसका फोन आया? Get a pick. We move in. Got it? सी आएंगे इस बार शायद। पुश मत करो। I'll clip that jet's wings. Holding position. Let's hold positions. Smokes up. Reloading. Reloading. Smoke's resonating. Spike down B. One enemy remaining. मंचर पीछे तेरे ओमन है। मरा ऐसे ही होमन है, कब का मरा होमन। स्क्रॉल करता हूँ क्यूटी ऑनर के स्ट्रीम में आ जाता हूँ। अरे पैंडल चाहिए।
बी क्यों आ रहे? उनका बी नहीं होता है, पागल ही है पूरे के पूरे। देख फिर से बी। स्कैटर का हुआ है। एल चाहिए, इधर आजा। बी या कोई नहीं है, ये पे कोई नहीं है। स्मोक तो है एक है। क्या स्मोक कर रहे हैं? Spike down B. One enemy remaining. My ult's ready. बी के बारे। 30 seconds left. Planting C, Max, planting C. Spike planted. सौ टक्का का ही तो कैंप कर रहा होगा। Smoke's resonating. AWC का क्यों लगाया है? मैंने किया था, मतलब वॉच पार्टी किया था, बट फिर बाद में सोचा एक मैच खेल लेते हैं। मेरे को NRG का देखना है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग डायरेक्ट डिसाइडर मैच देखेंगे भाई। जज्बा, जज्बा। अब आएंगे ए पर तो मैं अल्ट करूंगी। तो जा ए पे, जा ए पे जा। Smoke's resonating. Listen to this. Right here, right there. इसको बोलते काउंटर अल्ट। Pairing up. This one begins. That's a concuss. सीकर अरे सी केयर बोला था रे। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। Heal फेंकना, heal फेंक। Spike down. अरे स्टेयर्स, स्टेयर्स गया। Last player standing. नाइस। होल्ड करो, होल्ड करो, इधर ही होगा। होल्ड करके heal, होल्ड करके। तो प्लान नहीं होता। हाँ, ज़्यादा रूटीज मत यूज़ करना। शायद ही रोटेट करेगा वो। 30 seconds left. मैं नहीं कर सकता कैसे वॉच पार्टी? नहीं, उधर अप्लाई करना होता है ना वॉच पार्टी के लिए। सबका अलग होते करते वो लोग। आपने नहीं किया था? स्पाइक यू है, स्पाइक। स्टे बी से ना आ जाए। मेरे को नहीं पता है स्पाइक किस हाँ, मेरे को भी नहीं पता था स्पाइक उधर है। Sound is everything on the battlefield, so listen for noises. You will hear those jerks before you see them. मेरे को आया कहाँ से देना? तुम फैंटम बाय करो या वैंडल? फैंटम बाय करो, फैंटम बाय करो। बोल रही हूँ मैं कि मैं देती हूँ तेरे को करके। अच्छा तू, अच्छा अच्छा, मेरे को बाय दे रहा था क्या? ठीक है, कोई ना, कोई ना। Get out of my way. Smoke's resonating. ओडिंग कर रही है क्या? हाय पावर क्रिश, वेलकम टू द स्ट्रीम। हिल नहीं मैंने अभी डाला तो नहीं। One enemy remaining. Flawless.
your roles and we'll crush it. सी आ क्यों नहीं रहे? उनको पता है ये नहीं हो रहा है, उनका भी नहीं हो रहा है, तो सी आना चाहिए अभी तक तो, है ना? क्यों इतना फुकड़ का खेल रहे लोग? क्या कर रहे हैं? हाँ ना, अभी तक तो आना चाहिए उनको। सी कभी एक बार भी नहीं आए। देख उधर ही है भैया, ही लोगा। मत करो यार, ये डुएलिस्ट है। अबे देखना, बी से आ रहा है वो, बता तो एटलीस्ट। क्या रे, इधर स्टेयर्स पे। छोड़ यार। जी चीज पे अगर ये बता देता ना कि बी से आ रहा है करके, वो रहना इतना इतना ऊपर तक आके उसको सुनाई दिया होगा अभी तक तो। क्या समझता है खुद को? ओडिन लेके वो भी यार, नहीं यार। सिल्वर 2 मेरा भी सिल्वर 1 ही हो गया भाई। अच्छी यार, इतना अच्छा खेली थी फिर भी मैं। 21-1 छोड़, 21 हुआ मेरा यार। छी यार, आयन क्यों था? चूतिया। रिपोर्ट मैं कर रही तेरे को, रैंक मैनिपुलेशन मैं कर रही। अगर जेट तू अभी आएगा ना, आयन क्यों आए मेरे पे? जी मैं चाह रही भाई, मैं सोलो खेलती हूँ थोड़ा। रुको, एमएमआर सेट करती हूँ मेरा। अभी थोड़ा सोलो करो, एमएमआर सेट करो। नहीं हो रहा है, बहुत गंदे आयन आ रहे। आयन इतनी गंदी औकात हो गई ना। चलो क्यों स्नाइप करते हैं, चलो चलो। रुको मैं कुछ और लगाती हूँ गन पहले। आओ, नहीं नहीं, मता मता मता। मेरे को आयन आ रहे, तुम बताओ। तेरे वजह से और एमएमआर खराब हो जाएगा। करेक्टस है ना रे ख्याल। ओए ओए, लास्ट मैच कैरी किया अपने आना। छोड़ यार। जेट हमारा ब्रो। आयन क्यों था मेरे को ये जानना है। आयन था जेट। छी, इतना गंदा है एमएमआर। छी। जेट जरा आना चैट में कुछ भी करके, लास्ट मैच का फिनिक्स वहां में पता चल गया नाम से। अरे ड्यूलिस्ट चाहिए यार। जेट स्मर्फ था। अरे ओपोनेंट का नहीं बोल रही हूँ, ओपोनेंट का छोड़ो, वो इतना नहीं कुछ अच्छा खेल रहा था। मैंने मारा है उसको कितने बार तो। उसका दिन था बस। कुछ वैसा टेक्निक वेक्निक लगा के कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग, नॉर्मल खेल रहे थे। लगी नहीं मेरी मैच। एटलीस्ट प्लैट का एमएमआर है मेरा। को आयन आए थे भाई, छोड़। अरे क्यों? ये मैच मैप मेरे को पसंद नहीं। लास्ट मैच जेट मैम
You want to come an opponent jet? आओ ना पार्टी में फिर से हरवाते आपको, नहीं रहने दो, मैं खुद खेल लूंगी, आप अपोनेंट में आ जाओ मेरे। वाइस खेल इस पे, वाइस खेलो केजे पे है ना मेरा ये सब अपोनेंट। आप स्मर्फ थे कह रहे, सारे बोल रहे आप स्मर्फ थे, मेरे को तो नहीं लगा। क्या रैंक है आपकी? एटीन गोल्ड 1। सी यू आर नॉट ए स्मर्फ यार, वो लोग स्मर्फ बोल रहे थे यार। सच्ची बताओ, आप अगर ज्यादा रैंक होगा तो भी बताओ, बट बताओ बस। अरे दीदी हाँ, तो लाइक हमारे टीम बोल रहे कि आप स्मर्फ हो। गेम साउंड बढ़ाओ स्ट्रीम पे। अच्छा कम आ रहा है क्या? पहले वाला बताते ना भाई, आप चेक करना। पीसी लिया अभी बस, रियल में हाँ, थोड़ा पीसी और लैपटॉप का थोड़ा इशू होता है वो। आपके एफपीएस अच्छे थे वो पता चल गया मेरे को, बट वो जो होता है ना लाइक जो इमोर्टल्स प्ले होता है वो नहीं था, इसलिए तो बस इनकी स्मर्फ है। नहीं है मेरे पे गोस्ट। है बट मैं नहीं दूंगी भाई, ये पीछे ही पड़ गए भाई। इतनी देर बोल रहा हूँ नहीं, मेरे को नहीं पता चला। यू आर प्लेइंग विथ इमोर्टल? आर यू प्लेइंग विथ इमोर्टल्स ऑल्सो? हाँ ब्रो, आई एम ए को फाउंडर ऑफ एन ई स्पोर्ट्स, लाइक मतलब नाम बोलने वाले थे पहले। अरे क्या कर रहे हैं लोग? ये क्या स्मोक से? जीत कैसे रहे? Give me the gun! Gun here. Careful. प्लीज रीमेक हो जाए, प्लीज रीमेक हो जाए, प्लीज प्लीज रीमेक। नहीं एफपीएस गए मेरे। No, no, no. He's online. प्रॉब्लम है हैकर कौन सा? व्हाट कौन सा? आई डोंट गेट यू। Placing swarm grenade. One enemy remaining. कैसे मर रहे हैं? एफके हो गए। Is everyone's tech still working?
Double check it, please. कौन सा स्पोर्ट्स टीम के साथ? अरे विंसियो स्पोर्ट्स टीम, मतलब विंसियो स्पोर्ट्स करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे हम लोग हायर करते हैं ना इमॉर्टल असेंडेंट। सो आई नो देयर। वॉच पार्टी खत्म। मेरे को वो एनआरजी का वो लास्ट में देखना है थोड़ा, तो मैंने बंद कर दिया, थोड़ा कॉम्पी खेलना स्टार्ट कर दिया। Blocking sight. Healing you. Here. Plant the spike. Night night. Many enemies need. Placing swarm grenade. गन लेने में ना को अंदर जाके। Swarm grenade out. प्लांट कहाँ हुआ है भाई? प्लांट कहाँ हुआ है? मैंने प्लांट देखा ही नहीं कहाँ हुआ है। सैलरी कितनी दे रहे हो? नहीं सैलरी नहीं देते हम लोग। जा भाई ये बातें हम लोग स्ट्रीम पे नहीं करते। सरेंडर कर दो प्लीज। 0 किल पे सरेंडर कितना ही प्लस होगा मेरा? Placing alarm bot. March through them. Spikes here. Blocking sight. हाँ भाई चुरा लो मेरा किल। स्टार्ट करो अंकल। I got the spike. मरना मत भाई में लो। Last player standing. जेट तेरा क्रॉसर इतने नीचे क्यों रहता है भाई? ओके ओके। बाहर चले जा केजे, टैप करने दो उसको। Placing swarm grenade. Swarm grenade out. I had to focus for a second. Alright, I take back what I said about those bots. माय फ्रेंड एंड इमॉर्टल, उसके लिए प्लेयर स्लॉट है? हाँ मतलब यू कैन जस्ट मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क वीएनसी डालना तो। हाँ जेट तेरा माइक बड़ा नॉइजी है। जस्ट अ सेकेंड। अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके वहाँ पे ना टेक्स्ट करने बोलो। I got the spike. Face your fear. Placing alarm bot. हाँ वो देखो, वो जो डिस्कॉर्ड है ना, वो सर्वर का लिंक दे दो उसको, ज्वाइन करके बताओ, मतलब लाइक बात करने बोलो, क्योंकि मोस्टली हम लोग स्ट्रीम पे नहीं बात करेंगे ना, दैट्स व्हाई। Down. Placing swarm grenade.
enemy remaining. Gun here. You can trust my bots. They only malfunctioned that one time. Need a drop. Honestly, she won't miss that finger. Can I get this? Gun here. I got the spike. I dropped the spike. Spike retrieved. Placing sentry. Enemy spotted mid. Here. Listen to ये आगे मत जाना. Spike carrier is dead. Spike down mid. Unavoidable. My ultimate is ready. Your duty is not over. Here. One enemy remaining. Their tech is only as good as their skill. And that extra money if some anyone beats. needs. I can buy for you. इनवैलिड रिंग बता रहा है, रुको दूसरी लिंक देती हूँ. Placing alarm bot. इमॉर्टल करंट चाहिए हमें. Reloading. Fall back. Fall back. Fall back. Spike down B. उधर क्या कर रहा है सब इधर आके. रुका मैं 30 देती हूँ. seconds left. इनवाइट लिंक. कॉपी लिंक. At the spike. Enemy spotted B. कितना फोन हैंग होता है मेरा. 10 seconds left. Last player standing. Spike down B. If you must fall, then fall near me. Need a drop. Spike here. Thank you. और मांग ले भाई. बहुत हैंग हो रहा मेरा. That's how you survive.
should run. Listen to this. Placing swarm grenade. Blinded. Careful. Enemy. One enemy remaining. Let me just swipe those biometrics. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. I have extra money if anyone needs. मेरा बहुत फोन हैंग हो रहा है यार फक यार अच्छी Face your fear. Here. Shutting them down. Enemy My remaining. ultimate is ready. Plant the spike. Barrier healing. I got their backs. Just, from the front. See, this is the link. बहुत देर दी मैंने नो but yeah I have given the link. ओपन नहीं हो रहे थे यार मेरे को एक्चुअली अकाउंट चेंज करके ना स्ट्रीम देखनी पड़ती है. Fall back. जेट अंदर मत जा. Spike down B. Alarm bot out. Swarm grenade. Swarm grenade. Area's clear. Planted. Placing swarm grenade. Swarm grenade. I found them. That's done. केजे को मैंने तड़पा तड़पा के मारा है. One enemy remaining. ये लोग ऐसे ही रिवील हो रहे हैं. Last player standing. क्रॉस प्ले कर रहा हूँ. लॉल I am not just your healer. I'll make them remember. I'll make human. I need this. Gun here. Spikes here. Alarm bot out. Spikes here. Let's fly. Blocking sight. Light deployed. Wall raised. Your duty is not turned out. मैं क्यों मरी? Spike down A. One enemy remaining. Planted for you.
Last round before the switch. We use everything after this. Spend it. मैं जा रहा हूँ जो स्पॉन आगे तुम एंट्री लो जहाँ लेनी है One enemy remaining. Spike down. Defender spawn. बंदा तो है मार दो भाई Switching sides. They look like us, but are they us? I have so many questions. Alarm bot out. Alarm bot out. Turret out. Recalling my bot. Last player standing. Don't stress if I die. It was great knowing you all. Also, delete my hard drive. Placing sentry. Help! Can I get this? Thanks. Enemy spotted B. Good. Turret destroyed. Last player standing. भाई कितना हिल रहा है वो They think they know pain. They can't begin to comprehend it. Need a drop. Can someone get this? Alarm bot out. अरे भाई मिड क्यों जा रहा है केजे क्योंकि आ रहे मिड पे वन फोर केवा भाग मत ना भाई
ये पे स्मोक कर दिया उसने। स्पाइक यहाँ पे नहीं है। कोई मिड नहीं देख रहा पाएगी, फालतू की मरेंगे। Enemy remaining. Spike Spike mid में। down. 30 seconds left. स्पाइक मिड में आओ। अरे भाई क्या लोग हो। एक को भागा। 10 seconds left. अरे भाग ना क्यों। अरे नहीं कर पाए। Match point. Oh look, they're desperate. Turret out. Listen to this! Out of charges. Face your fear. One enemy remaining. Spike down B. Defenders win. Who's up for a debrief? Anyone? No one? रुको, इनके मैच कहाँ तक आई देखते हैं। अभी भी इनकी चल रही है, एनआरजी की चालू ही नहीं है, सनसेट डिसाइडेड मैच चल रहा है। कौन कौन देख रहा है स्ट्रीम?
Match found. हेलो आवाज आ रही है मेरी What? क्या मतलब उनको पहले अटैकिंग लगेगा? What if they really got attacking? So I will drain the life from our prey. That's all they're good for. फर्स्ट राउंड में मेरे को किल्स निकालना है. 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 एक सेकंड रुको. मेरे स्क्रीन पे अभी कीड़ा था. कहाँ गायब हो गया? छी यार. गोल का नहीं लगाया क्या मैंने? अच्छा ये नहीं. अच्छा ये इधर आता है. नेवर माइंड. Smoke's resonating. Need backup. Need backup. Spike planted. Need backup. Last player standing. One enemy remaining. Burn bright, Phoenix. Smoke's resonating. Smoke's resonating. There. Enemy hawk out. Enemy spotted C. Last player standing. Spike planted.
These parasites aren't going to take one step past this place. Pull back. Spike planted. Smoke's resonating. Good attempt. Get here. Giving up. Last player standing. One enemy remaining. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. छूतिया लोग. सोलो में जीत गए. यस सर. एक जीती मैं. बहुत अच्छी टीम आई थी वो. मेरे ही प्लस कम लगा. और अभी देखो ना किसी घटिया टीम आ गई. मैं भी जीती है ना. Spike planted. Scout destroyed. Oh yeah! Monster on the loose! Last player standing. Gun She's here. still gunning for you! क्या मरा वो गेको. If anyone needs an energy boost out there, I got you. उसको म्यूट किया था ना मैंने. इतने ट्रॉमेटाइज क्यों लग रही है. अरे क्या ही टीम आई है. कुछ भी मर रहे हैं. मेरे को भी कुछ भी मार रहे हैं. मेरे को क्यों. मेरे पास गन भी नहीं है. ब्रीमी दे रही था. Caution here. अच्छा उधर है. Spike planted. Smoke's up. That's a concuss.
One enemy. Saving up. Here. They have no right to tension. The right rhythm changes everything. Smoke's resonating. Fire in the hole! Oh! Gosh! Oh fuck! One enemy remaining. Spike down A. लाइन देके जाना आगे फिनिक्स. Reloading. There. Concussing. सारा सेव कर रहा है. 30 seconds left. Hawk out. If it ain't got style, I ain't with it. You'll sit back and all I know my money. 10 seconds left. You want me serious? You got it. Need a drop. Barrier clear. I'm sorry. Smoke's resonating. Reloading. Smoke's resonating. Stand down. Reloading. Spike down mid. मैंने मैप देखा यार, ये लोग फाइट कर रहे थे तो. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. I'm sorry. Reloading. You want to play? Let's play. They're concussed. Come on, let's go! Aren't you guys see? Hawk out! Here, die. Enemy spotted C. Enemy spotted C.
planted. One enemy remaining. Last player standing. Smoke's up. That's a concuss. 78 दिया और मैंने उसको. They keep trying to silence us. We keep talking. खुद पे स्मोक करना चाहिए था. I can work with that. Smoke's up. One enemy remaining. Spike down mid. We dominated. I love it. Another fight? Clean slate. Let's leave whatever happened in the past. Reloading. Let me check. Okay. What's EWC Valorant. Who won the match, sorry. Get out of my way. अभी तक कोई नहीं जीता क्या? वही चल रहा है अभी तक. Smoke's up. Spike planted. Smoke's up. One enemy remaining. Heal up, squad. Prepare yourself. We fight once again. Reloading. Here. अबे पागल है क्या? There. उसको मार के आ गई रे. One enemy remaining. Spike's mid. Caution here. Team Ace. Eto. Now they know who we are. Reload. Last round in the half. Spend it all before it's gone. Reloading. क्या ही मरा होगे कोकोची? Gun here. Gun here. Hawk out.
Last round, yeah, I need to get off this. Smoke's up. Smoke's resonating. Need backup. Need backup. Your duty is not over. Yo, you can do that too. Right here, right there. मेरे मुंह पे आ गया वो. Careful now. Last player standing. Spike planted. जो क्रॉसर थोड़ा ऊपर क्रॉसर. Prepare for hellfire. Switching sides. Watch for my tech, everyone. If I throw it left and you go right, I can't heal you. Or hurt you, for that matter. No backing out now. Reloaded. Last player standing. Spike down A. If anyone needs an energy boost out there, I've got you. Reloading. Here. I'm gonna save this time. I'm gonna save this time. Saving. I'm saving. Here. Hawk out. Smoke's up. Down. Take it out. Spike down C. Plant the spike. Planted. Dead enough. One enemy remaining. Enemy spotted C. There. Last player standing. When you're poor, you get creative. मैंने भी आगा था भाई बहुत गंदा. One of my creatures. It's a good thing, all right? You'll figure out what they do eventually.
up. Smoke's up. One enemy remaining. İşimizi yarar değmez kara. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Spike's here. Держите се, люди. Teaming up. Enemy spotted B. Reload him. Smoke's resonating. Fox. Oh yeah! Monster on the loose! Last player standing. Sound is everything on the battlefield, so listen for noises. You'll hear those jerks before you see them. Spike's here. Spike's here. Need a drop. No backing out now. Get out of my way! Careful here. How? How? Plant the spike. Plant the spike. Last Spike player down. standing. Spike down. C. I have the spike. 30 seconds left. Whoosh, इसको by the net is worth it तो था. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? İşimizi yarar değmez kara. Hello. You want to play? Let's play. Hawkouts! Blinded. Barriers down. Spike down mid. Enemy.
ओ इस पर वॉक करके आया. Sage is Player standing. Don't start rush this. I want to be. My ultimate is ready. Saving. Don't give them ground. Saving. Bearing up. Enemy spotted A. Hawk out. Reloading. Reloading. Stealing sight. Heal up, squad. Enemy spotted. Hawk out. Spike down A. Barriers weak. Have the spike. Spike down A. Back where I belong. 30 seconds left. Our Last spike's player down. standing. Spike down A. Trust each other. That's all. Back each other up. Hawk out. Many enemies C. Here. There. Heal up, squad. Reloading. Here. Concussing. Planted spike. Healing over here. Caution here. Reloading. One dead. Enemy remaining. Here. Last player standing. I'm no doctor, but I can patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. Help a girl Out, would you? Cheers, mate. I got yous, okay? Teaming up. Hawk out. Smoke's resonating. One left. Fall back. Fall back. For you. That's it. Gun here. Here. Enemy spotted. There. Reloading. Need backup. There. Hawk out. Last player standing. Spike down A. Monster on you.
What must be done? Need a drop. Spikes here. Smoke's resonating. Plant the spike. There. Smoke's resonating. Concussing. One enemy remaining. Going up. Smoke's up. Sound is everything on the battlefield, so listen for noises. You'll hear those jerks. आई फेस कैम हन्ना ही वॉच पार्टी करनी थी इसलिए जरा देखना मैच कौन सा चल रहा है मतलब एनआरजी का स्टार्ट हुआ कि नहीं आई वाज वेटिंग फॉर दैट ये लाइक करो यार स्ट्रीम को बहुत कम लाइक्स हो गए Spike is here. My ultimate is almost ready. You want to play? Let's play. Hawk out. There. Healing spike. Spike up. Down. Enemy spotted A. I got the spike. Enemy spotted A. Plant the spike. Seek some outs. Plant the spike. Reloading. All right. There. Spike planted. 140 के को इसने Enemy remaining. Hawk out. Cutting their vision. I don't die so easily. अभी भी ब्रेक ही चल रहा है हाँ ना मेरे को लगा ही था बहुत लंबा चलेगा उनका तो तब तक ये कर लेते हैं 16 16 10 oh my god god oh my god किशमिश यारा मस्करा Have the spike. Spike drop. Reloading. Caution here. Go front. Your duty is not over. Back where I belong. Back off. My ult's ready. Get healing. मैंने को किसी ने कवर नहीं दिया Spike down. C.
हर राउंड एक किल कर रहे हो, उस राउंड मर भी रही हो। ओवर टाइम। Caution here. Smoke's up. स्मोक्स यार, ना करती तो टीम मर जाती भाई। छी भाई। Here. Spike planted. Scout destroyed. Hawk out. Last player standing. लॉल रेस 2 बार हगाए अल्ट। Switching sides. If anyone needs an energy boost out there, I've got you. Need backup. No prisoners. लगा ही था मेरे को जेट होगा आपके साथ। Smoke's up. Fall back. Time to hunt. Spike down mid. Fall back. Enemy spotted. Last player standing. Seconds left. 103 दिया था मैंने पिंग को। मैं अभी मैं वो ये देखूंगी ना मैच। टट्टी लॉबी आ रही है सीरियसली टट्टी। दे आर लाइक सो डम भाई, सो डम दे आर प्लेइंग। वॉच पार्टी हो ना, छोड़ो यार। हाँ ये वाली जीती थी मैं।
आड़ी चल रही है इनकी. But the energy's still there, and that's what we play for. They have been so loud already, and this is only day one. Now, you guys are about to take the stage against a French squad. The Gentlemates were roaring at the last Call of Duty major. So, how are you able to block that out and just focus on Valorant? Yeah, I mean, we're really good under pressure. Again, whether it's for us or against us. Managed to survive. Well, didn't last long. Lovers Rock. Vandal in hand, able to put it to good use. What a shutdown from Loida. Smars absolutely destroying him with that bandit as Loida gets a second. Will finally be taken down, but it's gotten into a 2v2. Huh? Somehow able to survive. क्या ही मारा. A damn close affair. The Heretics managed to scrape by. He got hit by that stun. That is crazy good stuff from Boo. Look at this. Bink. Oh my goodness. The second bullet gets in there and finds the head, and then the stun wears off, and he's good for the final. So now it's Heretics' turn. Start streaking some rounds together. Lovers Rock goes back to the op. He's going to be under pressure early. Has to tuck into the corner to avoid recon. Just looking then, see if there's any follow-up behind it. I wouldn't expect Boo to try to aggressively challenge that, but he's going to hear these footsteps. So this kind of gets a little bit concerning for me for BBL, because the IGL now has maybe a decent learn so far. We'll ban Fracture. Fracture. ओवर तो चल रहा है. We ban Breeze. Breeze. Okay. Breeze and Fracture banned. Team A pick, please. Haven. Haven. Yeah, pick Haven. Your side, please. Defend. Defend. Okay. Team B pick. Your pick, please. We will pick Ascent. Ascent. Defense. Defense. Cool. Team B, your last band, please. Team A, sorry. Team A. What's left? Lotus, Split, and Sunset. We'll ban Split. Split. Split's banned. Your band, please. We have Lotus and Sunset. We ban Sunset, play Lotus. Okay. Last band, Sunset. And we'll take defense. Lotus, and then Team A picks Defense. defense. All right, there you have it. Haven, Ascent, and Lotus analysts discuss what Heaven, Ascent, and Lotus. Athena's opinion. I'm not gonna lie. This is an M8's map picks. I feel like this veto has gone their way. Hi, When you're looking at a manager. map like Haven, NRG picking it. That's actually wild, considering mates have had such. यार मैनेजर में स्ट्रीम करता सन तो ख्याल है जा यार. Proven themselves to be, really consistent. And if I'm looking at these maps specifically, What about Ascent? I like that. Ascent is the one that concerns me the most about NRG. Yeah, 0% win rate the last few times that they've played it, which is kind of insane. If I'm NRG, I'm thinking they've picked Haven for a reason. They must have changed something up, because there's no way they're going to be playing the way that they're playing against Gentlemates, because they've been absolutely really, really good in their gameplay. And they're trying to get it to that third map, because their Lotus winner is insane. Yeah, so I'm thinking about the Ethan B. The B site. Still sitting on his wall in his net. Just waiting for a bit of a trap play off of contact on that sensor, but it's a full-on mid-push, and Rose has to hightail it out of there. A different role that he did play incredibly well versus EDG. Trevin going to take that first contact, but it's going to be fully flashed up. Luck now having to backpedal away. But we'll find a stun. Meanwhile, Rose around the back has this sudden arrival. He's only going to be able to clean up one. Valorant able to find two. What a volley of shots from him, but Woot still in this mix, still in this fight. Gets himself a 3K. Fishing for a little bit more blind, but players will rescale back over towards Boba. Looks like they might just be pushing. They have they have time for another pivot, and Loida's somewhat aware of it. Lovers Rock, he's quick on their heels though, in around the back.
I don't know if he has been scouted at all. There is no credence being lent to this for the moment. Loida able to find one. The turn back wound gets himself a 4K, but Loida gets BBL the opening pistol. Whoa, it is a crazy back and forth in this round. So many clutch moments. This one right here from Locke. I thought he was going to get the third for a second there. I thought he had Woot lined up, but not quite. There's Benji maybe, but regardless, really good read of the map there by the last two surviving players, keeping Heretics very well pinned in, giving them a really tough crossfire. The timing couldn't have been better there either. Absolutely nailing that. Clear of the dart. No further confirmation or doubling down on the information by BBL. Revealing area. Rian's actually that dart isn't going to get around the corner, so they know that somebody could be there. They're pinging it out. They're at least aware of it. Spot of the leg. And now they very much do know that this gun is in play. I mean, Krevin, if he had just pulled the trigger there. Yeah, I know. Would have had him dead, dialed in, not knowing it. But let's get tucked very close forward. Looks like he's going to reassess this. Play away from that sonic sensor. Well, they've got kind of a read on कॉल this. कर फोन तो विशद हाँ Gonna give us extra power. One enemy remaining. I think Gentlemates on an individual level are very strong. I think they have very strong players. I mean, I think it's gonna be hard. Just gotta be informed that day, play as a team, and we should be perfectly fine. There's never any pressure. It's just one game at a time. I'm just very excited to play against an RG, you know, they have like people like Ethan, double world champ, you know, so it's always a pleasure to share the same stage with them, so I just can't wait to play. Don't underestimate us. I feel like even though we're definitely in like a rough patch with our team and people from the outside maybe, you know, pointing and laughing, we're still NRG at the end of the day. Like that's kind of what we do. I mean, in RG, I feel like we're for sure ready for you. Let's go. ये ट्रॉफी है टीम Paris, faites du bruit! To everyone here in the building, welcome. Wherever you are in the world, if you've just joined us, perfect timing. Of course, we've seen the title defenders crush, literally, out of this competition. It's the Esports World Cup, it's Valorant, and it is about to pop off in the STC arena. My name's Ian Chambers, and we couldn't do it, of course, without our magnificent French host, Lou. Are you ready for this? I am more than ready, and I think that the Gentlemates fans are ready as well. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Vous le savez, c'est Gentlemates face à NRG, ça va être un beau match, je pense. And we're going to introduce the teams, and who else than the crowd themselves, than the fans themselves, to introduce them. Les fans Gentlemates, je vais vous demander énormément de bruit. C'est vous qui allez appeler vos joueurs
sur scène. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? On va y aller. Gentle! Gentle! Gentle, gentle, gentle! C'est parti! The French flag is in the bracket. The crowd is on its feet. And Paris has found its team. The Gentlemates are home. एनर्जी का है अगला हाँ अब भी है Des moments difficiles, mais ils sont là et ils porteront les couleurs de la France. आई गेस ये साउंड ज़्यादा है ना À Paris. हाँ अब ठीक है Ooh. The crowd has made their emotions very clear here in Paris. But we know that NRG come with their own attitude, their own fan base here in the building, and their own expectations to not get knocked out here and now. There's one thing to note is that energy are insane when the crowd is against them. Can they take the win today? We've set the scene, the crowd is ready for it. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Faites du bruit! Or how about that for a great opening for both Gentlemates and NRG. The feelings of the crowd, well known as noted by Ian Chambers, as we got ourselves ready for Agent Select for map number 1. The crowd is absolutely electric. Everything that you saw, 10 times more if you were to be here right now. Literally it's like an earthquake at the stage because of these teams coming onto it. As we're looking right now, Gentlemates with so much to prove and everyone on their side. This is going to be an intense moment because with a crowd this big, so against your team energy, they have so much to prove, especially coming off of that Champions Win 2025. A lot of that is going to be down onto NRG's leader, Ethan, the two-time champs winner, to bring them back into it and make sure that mentality doesn't falter. The team getting ready and prepared to play in front of their crowd. As I said earlier, the first ever meeting between these two squads. And the bad blood is so easy to see because NRG makes it so easy to dislike them if you don't already like them, if you don't already have an affiliation. And the mates are taking the bait. We'll see how this all goes here. As we're saying, for the star players of Gentlemates, you have to look at Martin, but every single one of them, pound for pound, very different story. For Starkster, this entire year is about redemption. Him now being back into Tier 1, being one of the first ever world champions in Valorant. Now in this position, having to fight back Props, newly added to the team, Mini, that was the only remaining member after last year's disaster of Gentlemates. And now, right here, Beepo, at the beginning of the year, he could not face on the head-to-head duelist versus most of the players back in EMEA. Now on a different role, bringing in different value for this roster. Yeah, it's kind of insane. The value has been there, and of course, they've come a lot longer of a way than we've expected. Here for Gentlemates, they're doing a phenomenal job, but like you said, Martin, he has to be that star player for them. He is their winning condition, and I'm looking at NRG and I'm thinking, who exactly is the winning condition here? It's Kiko when he's on that duelist, and if he's not, I'm looking at Mata. Yeah, where is he? A lot more from him. He's been a little bit quiet this event. He's been struggling to get a lot of those opening picks, but they've also switched those roles. Now Ethan playing the Neon for some reason on a few of these maps. Yes, it worked out, but is it something that's really consistent, something stable that you're going to keep onto a roster? I feel like that's a really big question here. And for NRG, I'm just looking at them to have that resilience.
Yeah, again, part of that group of death making it out as the second seed. Anyone that made it out of there would be happy. But this NRG squad just wants a sniff, an opportunity of a chance to make their Start करो भाई, start करो. knowing the fact that Team Heretics are already out, who will be the one that rises above here in Paris and stakes their claim to fame as the second ever winner of Valorant, as we are almost ready for Agent Select. You can see the keys being displayed by each squad, their opportunity at risk on the line, and if you lose, they get crushed. Single elimination is brutal, Kukuka. And we're talking also about a bracket full of teams for especially two regions, Americas and EMEA. Of course, we're the first one. We're obligated to have an EMEA winner, but I think that this tournament is bringing back that discussion in the short term, in this type of format. What region can be on top as we jump into the Agent Select for Haven, and it looks like no changes on the sides of NRG. Eva is going to be playing on that neon. I don't know how I feel about this one. I'm gonna be real, but I do like Pico on the chamber. I think when he's on that duelist or when he's on the chamber, that's when he's been really good. His ACS, I think I looked at this last night, was always over 280 average when he's playing that duelist, when he's playing the chamber. And I think he's been so good at getting those opening picks for his team. But on the other side of mates, they haven't locked this in yet, Kakuka. I mean, I think that they're just trying to make up the time. Enjoy this experience as well. Love seeing the coaches behind the teams. Some regions just, you know, do it better in that sense. I love the head-to-heads that we're bringing. Almost the same composition as we're saying. Part the difference between Kiko and Bebo playing different sentinels with different tasks also in the map. 4 teams qualified on through from EMEA, 3 from the Americas region, but this is the only EMEA versus Americas matchup in the quarterfinals in the face of a sea of pink and blue. Will the reigning world champions NRG rise up, or will it be celebration day for Gentlemates? Let's find out as we send it on over to Mitchman and Tom. No, for sure. I think this is going to be one of those matches that even becomes mental more than anything else. For NRG, this is going to be about silencing the crowd to stop them pumping up the opposition. But then the other side of it as well is going to be, is the pressure too much for the mates? Like, is this going to be a moment where, sure, you've got players like Starzo who seem to relish the crowd, seem to enjoy having that crowd on their side, but others, like Prox, for example, maybe hasn't had that sort of pressure before, the noise that erupts when you're trying to make a play, maybe even some steps not being heard while you're running around the map. It is experience versus a team and their crowd. And the fact is, a lot of the time, experience still comes out on top, and that's what NRG has in droves. Pistol round. Both teams wanting to get off to a hot start. Oh. Push up from Mini. The Neon already finding one, but not expecting so many players to have already pushed past. Beepo on the site under pressure, has a rotation coming in, but already Marder will take him down. The remaining defenders a little bit further away as they look to wrap around, and although Cover going out. either way, looking to try and get back into that retake. A 2 versus 4, an attempt that doesn't look likely, and Martin is now all that stands in their way. It's looking Oh. will go the way of NRG. A first, and already look at Ethan trying to silence that crowd.
it seems like we might be back on a roll here, Tom. A little bit of a shaky start in the back end, but hey, what we're seeing up front's looking pretty good. In terms of NRG, as we said, or as perhaps we did, for this squad, if they come in here and start confidently, that's going to be what they need to shut that crowd down. We know that they draw energy from playing against the crowd. They don't really have much of a choice a lot of the time, certainly not on European soil, and what we've seen, certainly not on French soil in this very city. But that never stopped them before, and it doesn't look to stop them now. Up against the Pistols, a decent trade with Starzo claiming one. The shock dart's deadly to start, and they've even stopped the aggression out of NRG. The brakes have been pumped now by the attack side. And even being able to contest like that with the weaker weapons, not a bad sign. Instant rotation from the Gentlemates, who now will have to play a gamble. Stacking up a side blind, and well, they haven't decided where they want to put that nest egg just yet. Yeah, taking their time. It's going to be integral that while having this much of an advantage, you don't want to throw too much away. They only brought 2 rifles into this round, so the SMG that has been lost is not too detrimental, but it's what the mates look to do with it. And unfortunately, they're on the wrong side of the map. Now the cam eventually is probably going to give the game away. Depot should spot the majority, but now they are just too far away 30 seconds left to get anything from this scenario. Yeah, having to flood back in after is not going to be ideal. You can see NRG even giving them the respect, waiting for extra utility to come crashing through, assuming that they would try to do some extra damage on the plant. But eventually it's found, and okay, mates managed to find themselves a tunnel out to sight. The flood has begun, decent damage. If they find another kill here, the cost will really start to add up, and nice work from Brock to stop this from getting even more scary. Look at out still with the 2 rifles. It's not quite as bad as it could have been, but signs of life early on from Gentlemates, and every pick they get, even with the classics, the crowd's erupting. Yeah, for sure. It definitely, like, let's not beat around the bush. This is a biased crowd, an incredibly biased one, but realistically, all the players on the NRG side have been in these sort of scenarios before and have got that experience in droves. They went into this map of Haven, one that in this tournament at least hasn't looked bad for the mates, but ultimately is one that they are 6-1 on over the last few months. And already with an operator on Takiko, this buy has a lot more bite than might be expected. Well, a minute 15 on the clock. This position for Mini is about to be tested. The drone's gone through, it's spotted him. The wall up to get out, actually blocks the flash. Beautiful work from Mini. A second on the tally. He won't quite have a safe way out. Try to speedily run across, but down on 36, he's worried about the spam for Kiko. Grabbing one from that long position, the op. A big threat here, and Ethan's gonna try to take space towards their spawn, be a menace on the rotates, but they've spotted it. They're more than aware, already closing in the walls on him and leaving it into this 4v2. Teleport's ready. Even still, the weaponry in hand gives them a chance. Good flash will force Kiko back and force him back far. Not with a lot of control other than what Brock currently holds. It's a fantastic dart, but he's unable to capitalize on it. Even still, a low HP player, but they go straight through. Mini with his 3rd kill of the round, and that defusal is already underway for Kiko. Holding onto the gun holds so much more value than throwing it into the wind. A singular kill coming out from a bonus round, but it's a bonus. They will be able to rebuy. Well, that's exactly it. Look, if you've got the operator, you want to go for that save, of course, especially with your teammates still having those credits to bounce back into the next one, approach this as a unit. But this is where it all went wrong. Mini was caught in that corner. They were wise enough on NRG to put the drone out, sensing that they lost that mid space, that maybe it had been stolen away. But the fact that his wall perfectly... Let's do the same round. The same round, that's going to be tough. You're going to push up in mid again? But it was that wall, blocks the flash, leaves him with an opening. He gets 2 for it and gets out. Great work by Mini early on and by mates to put the first on the board. NRG, like you said, they've got that buy still around the operator. Which is going to be a danger. That shot connected. Yeah. Starzo's on 15.
A little bit lucky maybe to be alive, but the wall has done the work. And actually the defense already going for a massive rotation back towards the A site. Realizing their leader is wounded, but he's not stopped pushing. And considering how much ground he's already got, it's surprising that they're still there. There you go. Now the defense will rotate back again. Their IGL has got them all the information, but in the meantime, NRG have just been sitting pretty. And I'll be honest with you, I think Starzo's dead to rights. Yeah, he tries to swing and get anything he can, but it's Kiko to shut him down. Immediately look to explore the other side of the map. NRG find that pick, maybe assume that you've lost such deep A main control that the rotates would come in, but take a look at Made's position. Still ready for this garage push, still with 2 towards the C site. Bippo at least managed to find the first, but it was just the ultimate, so numbers still there for NRG, but the man flying under the radar. There you go. Corner, it's Martin! He's given them some hope. Bro. Chance, but it's Mini who has to convert that to a reality, a 1 versus 2. No chance to deny that plant. It's been good so far. But in the clutch, it's going to be difficult. Well, he knows where Scuba is, that's for sure, but the operator is holding. Kiko hasn't missed a beat so far. And that'll be 3-1 in favor of NRG. Perhaps a prediction of the future scoreline. We saw it earlier. But this is it. Martin does so well from that corner, but they chipped away at the numbers early on. NRG finding 2. Although not for free, it was the ult of Phoenix traded out, and of course, keeping the numbers favorable meant even with Martin stepping up in a big way, it wasn't quite big enough. You hear there a call. I don't know if that was a reactionary, if there is a timeout coming from Mates, but it wouldn't be the strangest thing to see it this early on. No, I think a lot of what's sort of troublesome for them early is you have a defensive setup that does revolve around you being a little bit aggressive. Like that double duelist isn't the best at just sitting in corners and waiting to be pushed. The problem is they are struggling to deal with Kiko's operator. Like he has managed to not only hit Starzo twice within the first 30 seconds or so of the round, but then also shut down the pushback into the site and find another pick elsewhere. If he's going to be informed today, he is probably the most terrifying player on the server, which is saying a lot considering Martin's recent form. I say recent, it's been the whole year. But you do feel that in this sort of matchup, you're going to need a little bit more than one man. But thus far, they haven't been too far away. Pause early from Mates. Now on the defense, they see pressure again across the map. NRG upping the pace this time compared to before. Mates already on the rotate into this C site. And on the way, they've lost Mini. He was trying to quickly get back. They needed reinforcements. Down, C. Well, at least for now, it's only going to be the one-man disadvantage, but with the plan coming through, the weapons what they are, seems like success is written in the stars for NRG. It's a very close position for Ethan. It's recovered in the hands of Starzo. And an even 3v3 to play. It seems like they're going to buy time, though. A lot of time being bought, in fact, for Scuba. Brock's found one with the ultimate, and just look at the wraparound that's coming in from behind. He TP'd to the other side of the map, but it might not even be relevant. Brock has already managed a couple with utility. And now Prox doesn't even know that he's already dead to rights. Scuba had him locked in. It was 3 for Prox on the round, but the round is still NRG's. After the timeout, not much changing. NRG continuing on in this form, and for Gentlemates, the crowd loud as can be. Every 1-3 scored. It'll be the full buy rounds where things do start to take a turn for the better, you would hope. Right now, NRG seem like they've got the solution. They were playing these slightly slower rounds, now moving to a much more direct approach, quickly making their way through Garage. Pulling those rotates from Mini, who wanted to be by the sides of his buddies, but is sent in the other direction. Now, Hunter's Fury is a panic right away. May see a bit of contact here, a bit of presence towards A long. They pop an ultimate, damage found for it at least, it's somewhat of an upside. But I do feel like for this attacking side, they're looking at this as
They've got all that control early. They're causing these reactions quite quickly out of the defenders. And as a result, they run for a fake here. This is perfect. Yeah, the ruse has worked wonderfully. Counter paranoia. They still believe that there are members about to put pressure on towards this A site, and instead the B site is completely under their control now. At least in Mini's case, he still has an ultimate to play with to maybe try and get them back in. In fact, if they re-aggress too far, there is a player just watching that cross, but never mind, Marta's won that kill anyway. Even still, trade back from Starzo keeps things level. With Brock so desperately low, they're only just making their way towards the C side. Ethan knows he's going to try and play a little bit aggressive, but the wallbangs have actually done even more damage. Oh, Brock now. रुको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करती हूँ. Mini's come through with another, and he's even doing everything it seems with the ultimate, but they still have to watch out for Scuba again in that backline. He's been a problem wrapping around, but he needs to get one of these kills immediately, and Mini is just too much at the moment. 4 for the duelist. And he will give another round to mates. Hello. आवाज आ रही है? हाँ. ओके. चल रही स्ट्रीम ना तेरी अभी भी? हाँ चल रही है. रुक आया. वॉच पार्टी कर रही है ना? Yes sir. चलो chat. 4-2. The defensive side looking to try and build off this one. कहाँ है लेवड़ा? NRG have been pretty good लगा था आवाज. झोंकले में. finding response. अच्छा. The 2 rounds that Mates have managed to win have been purely off the back of Mini, but this one will at least start with the death of Kiko. He's been a problem for them so far. Cover going out. And he's not looking to try and re-aggress. अभी कौन सी चल रही है मैच? अच्छा एनर्जी की मैच स्टार्ट हो गई. हाँ अभी स्टार्ट हुई है. It's in the hands of Ethan. And it seems once again. एनर्जी एंड Emmet gentle mids. ओके. अरे टाइटन देख रहा है क्या? वही है. कुबाई है. हाँ ठीक है चल. ओडिन कर रहा है. ना वो हमेशा. Does at least mean that the defensive side have an opportunity to try and find लेग डे मार के आए हो मैच. आज क्यों? Marta trying to ult to shut somebody down. He's at least firing a distance. सॅटर्डेला नको म्हणले आमचे कोच साहब. कोच ट्रेनर असते रे. तेच ट्रेनर छोटे ट्रेनर. कोच बोल दिया भाई ट्रेनर को. वैलोरेंट इतना दिमाग में है ना. थोड़ा सा लालागिरी हो जाती है. 3 in quick succession. And Beepo is nowhere near the action. The attack side respond immediately. Look to extend that scoreline even further. वो देख ना कैसे बैठा है स्क्रीन लेके. हाँ ना. तुम पूरी स्क्रीन को छाती पे लगा लिया उसने. कैसे चल रहा है मैच? कौन अच्छा खेल रहा है? अभी स्टार्ट हुआ है. एनर्जी है ना लेड में अभी. ओके. Mada. Wait, what? This is what we're talking about, though. This was the sort of thing where it's like, if you can silence that crowd, नाज़न. तुझे उनके आपले ट्राउट से. अरे यार. जेवण बनवलंय का? Again, desperately needing a response, but already मतलब जीवन के. from their puzzle in this one. सकाळ धरून उपाशी दुपारी नाही जेवण. See if they can find those pieces, put them together for mates. Beepo starting to show up the rifle. सकाळी तेवढी आळू छोडी खाल्ली होती ना तेवढंच. Keep the trades in a decent position, ready for this TP up. Worried that he's crossed, but Kiko seems to be trained in. He knows exactly what's at play, but he wasn't ready for Starzo. इधर नहीं हो रहा क्या ऐसे? ओडिन को गाली नहीं पड़ रही इधर?
पता है ऑल चैट में नहीं क्या हे लुबड़ा उड़ी है It's just whether or not though that is another flashy plan. That has been the problem for mates so far. Some individual brilliance, no doubt, but NRG seem to have had the response almost every time. That was a big one though. Like having a round where economically you weren't in the best position and coming out on top is definitely going to help them out quite a bit. And the fact is, in recent form, it seems like both of these teams have been better in the second half. The defensive rounds. क्या इस स्टेडियम तीन प्लेयर्स है आज के ट्रायआउट्स के लिए। तीन और हमारे इसमें से कौन कौन है यार? ट्रैकी को बोला था मैंने, बस ट्रैकी को पूछा था मैंने। That's the big difference, I have to say. It's Maddo who said it, not me. Like, don't throw that on me. That's the thing, though. For NRG, you know, I think back to Paris and back to champs, there were definitely, it was definitely clearly a crowd that was rooting for them. I will say, I don't think it was quite as in your face as what we're seeing here. Well, mates and KC weren't there. So, yeah, exactly. Those are the ones that really have the dedication. At least in Valorant. We'll see tomorrow. Vitality will be playing. If they can get this sort of crowd going, I'll be interested. कुछ रिप्ले वगैरह दिखा रहे क्या ये लोग? Already under a little bit of pressure early on. Of course, this was the pause taken. अच्छा फोर स्टैक है सर। A little bit wary that the mates might be starting to awaken. सोड कुणाला बोलू नकोस, त्याचा मॅच झाला आता। हॅलो काय फोर्थ प्लेयर आहे आपला, 4 जण आहेत आज न्यू प्लेयर। ट्रिकीला एकदा कॉल लावून सांग 10 वाजता VCला। Time ticks away, and when pressure's put on, they might start to think that maybe he's moved, maybe Kinko's part of this. 5 स्टॅक कॉम्पी होते मग। He's the reserves. They're going to use a wall to cross, but still one tucked in that corner. Starzo 17 HP, and they haven't cleared the wall. Got it this way, but आज ट्राउटला तो स्नूपी गॉड गेम नको नाव घेऊस। आम्हाला DM आले 3 जणांचे, ते विचारतात ट्रायआउट्स उद्या आहेत का गोल्ड प्लॅट साठी? डिस्कॉर्डवर मेसेज आलाय। मला एकानं पण टाकला नाहीये। फॉर्म भरायला दिलाय ना, कशाला विचारायला लागलेत मग? डिस्कॉर्डवर मेसेज टाकलाय का आपल्या? अरे प्रीमियरचं टाकलं नव्हतं का? असं का करतोयस? ट्रायआउट्स टुमारो। अच्छा तेच मेसेज टाकतायत की मग ते गोल्ड प्लॅट साठी का उद्या आणि त्यांना कळना झाले थांब जरा। अरे पण त्याचा त्याचा काय संबंध? त्यांना वाटायला लागले वाटतं की हे आपण टाकलंय तो फोटो, ते सगळं मेसेज त्यांना कळालंच नाही वाटतंय लोकांना। असे करतात ते, आम्हाला काय माहित नाही त्यांची रँक। अरे त्यांना कन्फ्युजन झालं असेल असं, ते सांगतो सगळ्यांना। मला का कोण काय बोललं नाही? तुला कोणाचा आलता टेक्स्ट? आपले आज न्यू प्लेयर आहेत त्यांचे। Right up close, the spam coming desperately close to taking down 2, but everyone's still drawing breath for the attacking side. The B side theirs, and they look now to brawl deep. काय chaos चालू आहे? They don't know quite how many mates were झालंय there. काहीतरी। But Starzo's got a friend hiding right behind them. अरे बाप, क्रेजी क्लच वर क्लच निघाले रे। Their way back into this, and even with Prox finding one, नॉट क्लच, the numbers are against him. काय? 1v2 झाला। बॅकग्राऊंडला किती होतो ना यांचा? तेच The positioning is, and also the fact that Hunter's Fury is available to try and
weed either of these players out of position, it is going to be nigh on impossible. Like, you have to bait that ult. You have to hope that the bait is taken. Oh my god. That might just be it. Brook goes down. Leaving it down I to just go. Oh. खतरनाक क्लच. डूबा सबको ले डूबा. It seemed like that round genuinely was a done deal. I thought that we'd see the ultimate come through, but maybe just feeling like they were able to close it out without a bit of a gamble taken. And well, I guess at least Brock will have it for the next round, but ultimately, I'm not sure if that was worth it. Quite possibly not. No, I think that's going to be heavily debated after for about 2 seconds. 5-5 scoreline. For Gentlemate's a chance to take the lead at the halftime now. To forget those first few rounds that started to slip away and didn't really stop. 3 मैचेस खेल रहे हैं अगर. अच्छा सोलो खेले? NRG seeing that एक मैच खेल लो सब्सक्राइबर सब. pump the brakes. They look for a slower round, but this time the mates aren't sitting back. Passive RP instead, looking for the pick just outside. Mini gets आयन ची यायला लागलेत मला आयन. and a clean advantage. आयन हो बघ ना डोकंच फिरलं. टीममेट्स पण आणि अपोनेंट्स पण. हो. एवढे मार पडले आपण. ते बहुतेक त्या दिवशी आपण ब्रॉन्झ सोबत खेळलो म्हणून झालं असेल मे बी. With 30 seconds left, they now go walking into what is the lesser stacked site. It's only going to be one man defending it. The kill trip has been removed. हाँ ना. They will get one entered lol. मेरी तरह ट्रिप लगाई थी देखे उसने. Benito's a little bit ahead of the play, and in fact, maybe going to try and make a move. They are. They're going to move ahead of it. Hunter's Fury sets him up. No Piranhas come in. NRG haven't been able to get the spike down. वो देख ना अल्ट को अल्ट नहीं बोलते वो अल्ट का नाम लेके बोलते. हाँ ना. मरेगा नियॉन. Never mind. Fall back to the mains to flee the site with 3. Gentlemates went from being deactivated, from losing so many of these first couple rounds, from us wondering how long will the crowd keep on cheering if NRG keep on finding rounds. This is very much changed as time has gone on. NRG और RNG chat पे लिख रहे लोग. 5 of the last 6. And at least neck and neck, that chance to lead at the half now looking like a likelihood. That Hunter's Fury is still available for Brock. I wouldn't be surprised if we see enemy mark. क्या wall बनी है देख. In that execution, but perfect एकदम. At least for now, it's patient. I also see Mini with that overdrive, and in the retakes, that has been a menace. In fact, again, it's not a retake. अरे 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 अरे. They're going ahead of the curve once again. This time the spike at least has been planted. Oh my god. Doesn't seem like they're going to last long. 3 players थ्रो कर रहेगा जानबूझ के. मेरे को क्या पता. But Kiko's still fighting back. A couple of low players. Kiko does his best, but now क्या उल्टी थी भाई. 17 HP. Nice first shot. And a player tag low. A shock dart. शॉट है वन शॉट है बस. हाँ ना गया. फिनिक्स ने अल्ट क्यों की ऐसे ओपन अल्ट कर दी. ब्रॉन्ज लॉबी में कोई करे ना भाई. भाई मैंने आज ब्रॉन्ज लॉबी देखी भाई बहुत दिनों बाद. मैं तो बात करूँ मेरे से. मेरी स्ट्रीम देखना तो बाद में. हेल्थ भी बुरा क्या. रो रही क्या तू. हाँ. मत रो आएंगे हम अच्छी लॉबी में आएंगे. वो लगता है थोड़ा सा ऑफ टाइम खेलना पड़ेगा डू. है मेरे को ऐसा लग रहा था छोड़ यार मैं अकाउंट बाय करके मैं दूसरे अकाउंट पे खेलती बट मेरे को इस लॉबी में नहीं खेलना. बाप रे.
कोई कॉम्स नहीं सुनता, सब आई खुद को आईजीएल समझते। अरे जो आयन का था ना वो बोल रहा था कि ओपोनेंट जेट स्मर्फ है, और जब मैच खत्म हुई तब देखा तो ये खुद आयन था, तो इसको स्मर्फ लगेगा ही ना सब लोग। मैं उसको बोल रहा नहीं स्मर्फ नहीं है वो, और वो आया अपोनेंट वाला जेट आया था हमारे स्ट्रीम पे, मैंने उससे पूछा था रैंक क्या है रे लो, हमारे सारे लोग स्मर्फ बोल रहे थे, तो मतलब गोल्ड 1, मला देख मेरे को पता है तू स्मर्फ नहीं है। गोल्ड वाले स्मर्फ होने लगे। आयन वाले के लिए ब्रॉन्ज 3 भी स्मर्फ ही है। हाँ ना भाई क्या है। आयन वाले को अनरैंक्ड वाला भी स्मर्फ है। छोड़ भाई। You guys are obviously wearing Cloud jerseys, not NRG, but you're just supporting whichever American team is on stage, correct? Yes, sir, of course. So, tell me how far you've traveled to be here, and how does it feel to be in Paris at the Esports World Cup? I traveled from SF, San Francisco, and California. It was a long travel, but it's been worth it. Have you got a message for the Gentlemates fans right now? We're coming back. What about you? This is going to be one hell of a second half. I want to end this with some more boos. Can I get another USA chant, guys? USA! 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 Love it. All right, let's get right back into map 1 and see where we go from here. Well, Ian Chambers might be with them, but I'll tell you what, the fans most certainly are. He wasn't with them. He was hiding his face. He's trying to get himself out of there, the coward. No, I can't blame him. We need to get those guys some security. That's a bold thing to do. ये लोग कोच है उन्होंने बताया। हाँ पीछे बैठे हुए कोच है। नहीं मेरे को लगा ही था कोच नहीं तो वो अच्छे कर सकते हैं। वो बोले कि कोच टीम लीडिंग विद कोच ऐसा कुछ तो बोला उन्होंने। चैम्बर कुछ एग्रो आ रहा है टीम प्रिंट लेके बैठा है यार। क्या पिक छोड़ी उसने, ओ माय गॉड डर लगता है भाई। टाइमिंग देखना कितना गंदा हुआ लेकिन। In the end, mates will just use this as a chance to take the orb. Slow start. They wanted to make it a bit more pacey towards that C site. Now they find it wide open. The pump fake has तेरी वाली बैंडेज देख, लेकिन बड़ी नहीं उसने। मैंने PRX का बड़ी लगा है। Realized that he was seen and they noticed him moving towards garage now. Start to put the pieces together perhaps. Nice. Hit into the C site. मेरे को ये कोरोना भी देने वाला था तू। NRG more than content to play the उसकी retake. पिच कराता हूँ। नहीं मेरे को दूसरों की नहीं चाहिए। कैसे पिक करते थे के लोग? देखना बस इंटेल ले रहे पिक करके, फाइट नहीं ले रहे। Maybe worried about a pop flash that could be put into play. Even still, the paranoia hasn't really got them the space they wanted. In fact, Martins managed to even things up. Waiting for Kiko to make his move. Instead, it's Marder to do the work. Give them that advantage back. A complete blind onto Starzo, and now Beepo is all that remains. Seeming like एमेट का अटैक गंदा है शायद से। retake. कुछ तो रैंडम एंट्री ले ली इन्होंने, बहुत रैंडम एंट्री थी। For them ended up seeming quite easy. And it could be important looking at that first half. So many of the rounds coming from कैसे स्क्रीन में घुस के बैठे, वो तो देख भाई उसने तो स्क्रीन को लाइक अपने छाती पे ले लिया। मैंने भी यही सोचा अगर इतना पास लेके हम लोग खेल सकते तो इजी है ना भाई। पास लेने से वही है ना थोड़ा सा लाइक फोकस इंक्रीज होता है, बट हाँ आंखें वैसे भी खराबी हो रही है। आंखें खराब हो जाए लेकिन करियर ना हो जाए। हाँ लाइनअप देखो, लाइनअप अब ट्राई करूंगा मैं। क्या था वो लाइनअप? ने वो रॉक पे देखा, डबल बाउंस दे दिया। ये लोग ऐसे स्विच कर रहे हैं ना प्लेस, इतने समझ ही नहीं आता। हाँ क्या चल रहा है? इसलिए रिप्ले ही देखना चाहिए भाई।
मरा रे वो ऊपर से मरा रे। ओडिन करता है, बहुत गंदा ओडिन कर रही है। हाँ ना, यही ब्रॉन्ज तो नहीं। ब्रॉन्ज वालों का फेवरेट है ये। पता चले एनर्जी का सीक्रेट टैक्टिक है, रेडिएंट लॉबी में ब्रॉन्ज खिलाओ। खेलना भाई, खेलना। ओडिन ओडिन ही ओडिन कर रहा है वो। इनका डिफेंस है ना अभी ऊपर। Yeah, as much as they were the early half warriors in that first half, you definitely know that this is a squad that can run away with things if given that momentum, if given that time. Already seeing one of the big headaches. I suppose two of the big headaches. We talked a lot about the judge and the neon nerfs. How you won't see it quite as much anymore, but he's the man who has been known to pull it out here. प्राइम का नाइफ लगाया था उसने। Big boy here with the big old Odin. इतने इन पे सबके सब स्किन्स रहते हैं, कितने अच्छे स्किन्स यूज कर सकते हैं। वाओ, खुद का स्टन में खुद स्टन हो जा रहा। कॉटन 4 के हो गया वो। तू कौन सी नाइफ लगाएगी? मैं आरजेक्स का वो गोल गोल घूमता हुआ कैरम्बिट। अच्छा वो वाला, वो कैरम्बिट। आरजेक्स या फिर जो कोरोना में का अभी नया आया है वो ना, ब्लेड। क्योंकि मैंने परसों उसका एनिमेशन देखा, वो भी शॉर्ट ही है, मतलब ऐसा पूरा ऐसा लंबा नहीं रहता वो। हाँ, वो डैगर भी बनता है एंड ब्लेड भी बनता है, स्विच कर सकती है। ये कभी नहीं लगाऊंगी मैं प्राइम का। अरे वो किट्टू के पास भी वही है ना। हाँ ना, इसलिए चला के देखा है मैंने। या फिर कोरोना में का गोल 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 घूमने वाला। पर यही नाइफ हो गए जो मैंने यूज किए। यही नाइफ यूज किए रे मैंने। एंड दिस नाइफ्स आर लाइक कि मेरा वो जो एक जगह क्या बोलते हैं, मतलब अगर मैंने दूसरा कौन सा नाइफ लगाया, अगर मेरा अभी पुग्गी नाइफ होता है ना, तो पुग्गी नाइफ होता है तो मेरा गेम प्ले स्लो हो जाता है। ऐसे ही, और दौड़ते वक्त ऐसे फास्ट नहीं लगता, तो ऐसा लगता है कि मैं स्लो जा रही हूँ, कुछ तो हो रहा है, मरूंगी मैं अभी, लाइक दैट। बट वो क्रेटोस का नाइफ नहीं क्या? हाँ ना, वो तो छोड़ो भाई, वो देखूंगी ही नहीं मैं कभी। आरजेक्स बटरफ्लाई भी अच्छा लगता है, इस मूवमेंट करने में मजा आता है। हा वही तो, आता तेच सांगते मी तुला। मला पोके वापरला का नाही, मला असं वाटतं मी खूप स्लो चालले, मग मी चॅम्पियन्स वापरला की नाही असं वाटतं मी खूप फास्ट चालले। ये It's a bonus this round. You have to remember that on the NRG side. Like that was one ready for योर डेथ, वो रेडी हो गया। not a bad trade. Get rid of the ult. Counter used on the other side for Marder, but I don't think he's going to find anyone on his route towards the remaining attackers. ये बहुत ही लंबा चलेगा शायद। जेवण झाले का बघा? The early trade out ends even. अच्छा छोटा फोटो घेतलं मी आता खायला। तू पण बघ ना काय slowly back in the other direction. जेवणाचं। मी तर म्हणते ही एक मॅच झाली की आपण बंद करू। हो बंद करून टाक, म्हणून तो आता पण बंद करू शकतो। Poking and prodding A long. हाँ ना। Swing out and see nothing there. Yeah, now the realization is setting in for NRG. ओटीवर गेलं तर अजून वेळ लागणार। The trap and a player still holding. करते का बंद? Walk through on counters. Yes. NRG realize it's a C take. They realize it before. तर पण आपण दोघंच आहे। Push comes in, but they don't get here on time. क्या असू दे, तू एक पूर्ण मॅच केली ना स्ट्रीम आई गेस। हाँ एक के लिए। चलो फिर बाय। NRG are so patient. They back out immediately saying we've got the man advantage. Bye bye chat. Bye bye everyone.